Welcome, guys. Welcome to another episode of live streaming with ICICI Direct, or we call it as "Kya lag raha hai expiry." As usual, we have Rajdeepak. Welcome, guys. Welcome to another episode of. We have Rajdeepak Singh, our derivative head at ICICI Direct, and Mr. Dinesh Nagpal. Dinesh Nagpal does our weekly show options की बात ICICI Direct के साथ. He himself is a technical analyst and a trainer. So welcome Raj bhai, welcome Dinesh sir. हेलो एवरीवन। एकदम डामाडोल मार्केट है एकदम इस समय तो अरे एकदम क्वेश्चन तो पूछ रहा हूँ मैं वही कि क्या लग रहा है एक्सपायरी. मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप इलॉन मस्क वर्सेस मार्क जकरबर्ग केज फाइट कौन जीतेगा, आपका प्रोबेबिलिटी वहां करेक्ट होना ज्यादा होगा देन टुडेज मार्केट की डायरेक्शन क्या होगा। इट्स सो सो वॉलेटाइल टुडे, एकदम पटक रहा है एक एंड से दूसरे end। अच्छा। एब्सोल्युटली राज भाई, आपका क्या व्यू बन रहा है? First of all, I had a view on Dinesh sir question. I know that answer. I don't know about the expiry right now. I know Musk will win, but I'm a big fan of him. But yes, expiry वाला तो as of now at current juncture व्यू क्लियर नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। थोड़ा टाइम हमें वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस तरह से डेटा पैन आउट हो रहा है, बिकॉज इंडेक्स इज गेटिंग मैनेज्ड by Reliance, by HDFC Bank Nifty, by Reliance, and Bank Nifty by HDFC Bank. So we need to look at them. As of ओके now, at CMP, I don't have a clear view on either of the indices. बस इतना बोल सकता हूँ कि 45,000 के ऊपर मुझे एक्सपायरी नहीं लगती। ओके. तो बेसिकली आज गामा वालों का नहीं, आज थीटा वालों का मार्केट हो सकता है. जो लोग थीटा खाने बैठे हैं, प्रोबेबली या साइडवेज मार्केट. बिल्कुल। ओके, तो राज भाई स्टार्ट कर रहे हैं. दिनेश सर से स्टार्ट करते हैं. दिनेश सर, कैन वी हैव द चार्ट ऑफ निफ्टी एंड देन वी मूव ऑन टू बैंक निफ्टी एंड देन वी विल टेक द डेरिवेटिव डेटा चेक. Sure, just one second. You can see my screen? Can you see my screen? Okay. So ये यस निफ्टी यस है। यस. 15 मिनट कुछ नहीं कर रहा है, जैसा का है वैसे ही है, डामोडोल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैड लास्ट 3 वीक्स। देखो, June 20th, द डे निफ्टी टॉप्ड आउट, वाज अ डे ऑफ ट्रेंडिंग। June 27 मंथली सेटलमेंट, मैसिव डाउन मूव, ट्रेंडिंग। लास्ट थर्सडे अगेन ट्रेंडिंग हिट डाउन। बट उसके बाद फ्रॉम फ्राइडे वी आर नॉट इन अ ट्रेंडिंग जोन, वी आर बाय द सपोर्ट सेल द रेजिस्टेंस के बीच में स्क्वीज हो रहा है पूरा का पूरा मार्केट। जितने पैटर्न्स बन रहे हैं, कोई पैटर्न नहीं चल रहा है, कोई डाउनवर्ड सिग्नल भी जो सेल का आ रहा है वो भी नहीं सिग्नल दे रहा है इस समय मार्केट में। वेरी वेरी टाइट स्क्वीज्ड आउट मार्केट राइट नाउ। या ये निफ्टी है। या सर, कैन वी सी द आवरली चार्ट? आई थिंक आवरली पे देयर इज अ पैटर्न इमर्जिंग, बट ऑब्वियसली उसका ब्रेकआउट या कुछ हुआ नहीं है. कुछ नहीं, कुछ सॉर्ट ऑफ. नहीं। या इट इज देयर, बट वो क्या, वो तो वैसे तो लास्ट वीक आईएचएस का भी था सॉर्ट ऑफ, जस्ट बेरली 650 कल फ्रीक टच करके गिर गया। बट नो, नथिंग नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमिंग आउट ऑफ एनी पैटर्न, एंड दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। व्हेन pattern formation start failing or start not doing what they are expected to do, it's not a good signal. ओके. Okay, so you are right now on the I'm sidelines cautiously, basically. I'm very Yeah. quiet. I am more right now, inclined towards कि अगर weakness आएगा, I would like to go aggressive with a put, then go with a long yet. नहीं लग रहा है. Pattern failure is not a good sign in a market. Absolutely. And especially that inverted head and shoulder which was made, हाँ, and I think the pattern has been failed because the right shoulder ke niche we have got बहुत a extend close. हो गया. So that's gone. Rajbhai, any view on Nifty data wise? Any view that you see? Uh, what happened in last 2 days now, the way market has moved up and down, so option writers has gone haywire. पहले लोगों ने कॉल राइट किए, ठीक है, माना कि कल एक इकलौता दिन था जिसमें मार्केट चला, बट स्टिल देन उन वो बिल्कुल भागे अपने कॉल कवर करने के लिए और पुट में एग्रेसिव राइटिंग हुई। आज सुबह जिस तरह से पॉलिसी के बाद हम लोगों ने दिया, उसमें इस बार पुट वालों की लगी। तो राइट नाउ जो आईवी को अगर आप देखोगे ना, तो आईवी धीमे धीमे 3 दिनों में बढ़ती जा रही है।
So currently it is around 11.5. Day high was somewhere close to 12 again, which was the high of last week. मेरे ख्याल से अगर आईवी आपकी 12 दोबारा टच करने वाली हो ना, तो दैट कुड बी वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर द मार्केट. अभी तक आपको ब्रॉडर मार्केट में कोई प्रेशर देखने को नहीं मिला. निफ्टी जो है आपका रेंज बाउंड हो गया, बट मिड कैप और स्मॉल कैप डेली बेसिस पे हाई बना रहे हैं. बट फॉर सम रीजन अगर अब हमारी आईवी दोबारा से 12 के ऊपर जाती है, इवन अगर वो इंट्राडे में भी जाती है, तो दैट मीन्स समथिंग इज गोइंग टू हैपन, एंड इन दैट सिनारियो आई वुड बी अ बिट कॉशियस. So again, जैसे सर भी बोल रहे हैं कि I would like to go on the put side, but the current setup, current data points is not suggesting कि हाँ भाई कोई बहुत बड़ा मूव आज हो सकता है. Right. Already during the day, what we have seen कि करीब 650 से हम 550 फ्यूचर्स में, और कैश में भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट मोर देन 100 पॉइंट्स का तो मूव देखा ही है. कि अगर कल Right. की क्लोजिंग देखें तो हमने करीब 125 पॉइंट का मूव देखा, और अभी हम बीच में बिल्कुल पड़े हुए हैं त्रिशंकु की Yeah. तरह. Yeah. तो Dinesh sir, और 19,600 में बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग है, करीब 2.5 करोड़ शेयर हो चुके हैं वहां पर. तो उसके ऊपर एक्सपायरी अभी तो नहीं लगती. अगर 19,610 620 के ऊपर स्पॉट थोड़ी देर ट्रेड करता है, देन सोच सकते हैं कि हाँ एक कवरिंग मूव मिले, बट एट सीएमपी नो, नथिंग. okay. Okay. Dinesh sir, can you just highlight what does IV mean? Because I am pretty sure a lot of you viewers are not Yeah. uh, like So it's yeah. implied volatility होता है IV. You can see it here on the screen. ये रहा. 1 minute. ये रहा. No, IV का कॉलम है. Okay. So implied volatility basically means the sensitivity of a premium. जो कॉल या पुट का प्रीमियम होता है उसका सेंसिटिव ट्रिगर होता है. सो एज द आईवी विल गो अप, सो विल द एक्सेलरेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द प्रीमियम. सपोजिंग आप बुलिश हो और आईवी बढ़ता है और साथ में प्राइस भी बढ़ता है, तो आपका कॉल का जो प्रीमियम है रैपिड स्पीड में ऊपर जाएगा. बट अगर आईवी म्यूटेड होता है, स्पेशली टुवर्ड्स द एक्सपायरी म्यूटेड हो जाता है और प्राइस धीरे ऊपर जा रहा है, बट कॉल स्लगिश वे में ऊपर जाएगा, बहुत स्लगिश होके. सो आईवी इज व्हाट वी कॉल द कैटलिस्ट or the fuel to a rally in an option, in an option stock. Implied volatility, it is the highest out of the money, it is the least in the money. At the money में balanced रहता है. और लास्ट 3 मंथ से मोर देन अ क्वार्टर आईवीज आर वेरी वेरी लो. इसीलिए जो when we buy also options, our yield returns are much lower. Even for strangle straddle shorters, the yield returns are much lower because of Hmm. this. Yeah. Right. Yeah. तो सर आई जस्ट पुट लाइक जैसे राज भाई ने कहा कि 19600 उनको क्रॉस होते दिख रहा नहीं है, एंड आई थिंक हाँ. निफ्टी वाज एट 19585 आई गेस समवेयर अराउंड 582 समथिंग, एंड नाउ वी हैव अगेन गॉन डाउन बाय 20 पॉइंट्स. मतलब वो 19600 के पास आती है एक सेलिंग आ जा रही है, एंड इफ यू सी 20 पॉइंट्स बात करते करते विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इट हैज गॉन डाउन. एंड गिवन द डेरिवेटिव डेटा राज भाई, आई थिंक वहां पे 2 करोड़ 2.5 सीआर का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है. एंड अगर आप राइट. लास्ट 1 घंटे का भी डेटा देख लेंगे, सो द हाईएस्ट लास्ट 2 घंटे का, सॉरी, पॉलिसी के टाइम से, सो अगेन 19550 एंड 19600 आर टू स्ट्राइक्स व्हिच हैव accumulated a lot of OI. Call writers have been very heavy on 19550 and 19600 since 10 10 15. तो ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि प्रोबेबली यहाँ के इसके ऊपर जाना बहुत मुश्किल है. बट अगर यही वो 610, आज का जो हाई है 623, आई सपोज, आई थिंक निफ्टी टू सी एनी कंसिडरेबल फास्ट मूव, ट्रेंडिंग मूव, शुड सस्टेन अबाउट 625 इफ आई एम नॉट लाइक, अगर मैं डेटा रीड बराबर कर पा रहा हूँ. हाँ, मैं उसी चीज को बोल रहा हूँ कि 610 620 या प्री पॉलिसी का जो हाई है 623 का, अगर उसके ऊपर आता है मार्केट ड्यूरिंग द डे, देन ओनली वी शुड एक्सपेक्ट रिकवरी, और आई वुड से डायरेक्शनल मूव. टिल देन, अगर मतलब सी, फ्रॉम लास्ट 3 सेटलमेंट्स वन थिंग इज क्लियर कि योर बैंकिंग स्पेस इज रिलेटिवली वीक, मच वीकर देन योर निफ्टी. या निफ्टी में कभी आईटी आ जाता है, कभी रिलायंस आ जाता है, कभी फार्मा, कभी ऑटो, बट बैंकिंग wasn't able to perform at as per the expectation. या तो
एक चीज तो पक्की है कि हमारे पास बैंक निफ्टी में वो ताकत नहीं रह गई या ताकत नहीं दिखा रहा है जिसकी वजह से वो मार्केट को हिला सके। तो बैंक निफ्टी में अगर आप सेम चीज जो हम लोग निफ्टी में बात कर रहे हैं, अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं तो ऑलरेडी 44,800 में करीब 70 लाख शेयर आ गए हैं, 45 में 1.2 करोड़ शेयर है, तो कॉल राइटिंग सिग्निफिकेंटली है। Yeah. एंड आई वुड से कि मैं जो हूँ यहाँ पर एक बार ये सोच सकता हूँ कि शायद जो है जो डे लो है 44,500 का, दैट माइट बी रीटेस्टेड। Okay. आप अगर देखोगे निफ्टी तो निफ्टी ने उस तरीके की रिकवरी दी है, बैंक निफ्टी ने तो बिल्कुल रिकवरी नहीं दी इन कंपैरिजन टू, मतलब अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी की रिकवरी की भी बात करें तो निफ्टी की रिकवरी ज्यादा स्ट्रांग है विज़ बैंक निफ्टी। Right. हाँ, तो बैंक निफ्टी के लिए जो निफ्टी के लिए जो लेवल है 10,620 का, सॉरी 19,620 का, बैंक निफ्टी के लिए वो 44,800 के ऊपर ही होना है वो लेवल। Okay. हाँ, और मेरे ख्याल से अगर मुझे इसमें डाउनसाइड खेलनी है तो आई थिंक अगर 44,600 के नीचे आ रहा है या 44,550 आई वुड से उसके नीचे आ रहा है तो एक फ्रेश लो के लिए शायद बैंक निफ्टी तैयार हो जाएगा। Okay. हम्म, राज भाई, एक और मुझे बात पूछना है करते आपसे। करते आ गया। एग्जैक्टली तो क्या 19,550 का पुट ऑप्शन कैन बी अ गुड ट्रेड एट दिस लेवल? यू सी 25 रुपए में मिल रहा है, एंड जैसे आप हाँ, कह रहे हैं कि 600 के ऊपर आज जाते दिख रहा नहीं है। बात करते जी, करते 31 हो गया, मतलब वो इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड वो 7 पॉइंट भाग चुका है अभी। क्योंकि अगर ऊपर नहीं आ रहा है, तो अगर अगर निफ्टी डे लो भी टच करने जा रहा है, तो दिस कैन टर्न इनटू अ 50 और अ 60 टाइप ऑफ अ स्ट्राइक, राइट? राइट राइट, बस एंड आई क्या थिंक है कि इट्स गॉन राज अगेन भाई, इट इज 35 नाउ, बात करते करते लो, इट हैज बिकम बात 35। करते करते वही हो गया, बट अगेन ठीक है। निफ्टी में अलग तरीके का मूव है, बैंक निफ्टी में अलग तरीके का मूव है। तो बैंक निफ्टी में जो हमने डिस्कस किया है कि इसकी, ओहो, अभी अब यहाँ पर भी वो चीज नहीं बची। बट आई कैन टेल यू वन थिंग कि अगर ये कल का डे लो भी टेस्ट कर रहा है ना तो दैट मीन्स आज का लो तो लेके जाएगा और उसके भी नीचे जाना चाहिए। देखिए, पिछली राइट। बार की जो हमारी निफ्टी की एक्सपायरी हुई थी 19,400 में हुई थी, 19,300 में टेस्ट करके 400 आया था। राइट। ठीक है, तो अभी भी मुझे ये है कि हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक नया लो मारे और हाँ। उसके बाद अगर रिकवरी आनी हो तो आए। ओके, दिनेश सर, इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई वांटेड टू आस्क यू। Is Nifty made, is has Bank Nifty made a sort of a distorted head and shoulder on daily charts? See, what you are seeing is the put chart. That's why I drew this line. Yeah. If this 19,550 Nifty put can sustain above 45, because this is the breakdown of that put today's expiry, then it can create havoc. फिर ये एक false bottom माना जाएगा, a bear trap, in a put writer bear trap, I mean an overall bull trap in the spot, और फिर भाग जाएगा ऊपर की तरफ ये. Okay, which one you said? Bank Nifty? Daily. Daily. Okay. No, no. I wouldn't call that. I would just call the Bank Nifty is just making lower highs, one after Okay. the other. You can see it out here. This was the high, then a lower one, then another lower one, then another lower one. Continuous lower highs मार रहा है, one after the Right. other. और Right. एकदम critical है एकदम. It's the reason why Nifty has not been able to rally at all. Struggle किया है पूरा एकदम. Okay. Primary reason, single Okay. handedly. ओके, सो राइट नाउ व्यूअर्स, देयर इज नो व्यू, कोई व्यू बन नहीं रहा है हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का। राज भाई इज वेटिंग, वेट एंड वॉच गेम है, एंड लुक्स लाइक अ साइडवेज एक्सपायरी, जहां पे ऊपर नीचे होते रहेगा, बट मार्केट कोई रेंज से बाहर नहीं निकलेगा। ऊपर में सेलिंग आएगा, नीचे ही बाइंग आएगा, दैट इज व्हाट इट इज बीन सीइंग राइट नाउ। सो नो नो रिकमेंडेशन फ्रॉम राजदीपक एज ऑफ नाउ। सो आई जस्ट टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम द चैट, जब तक कुछ व्यू बन जाए हमारे एक्सपर्ट्स का। तो okay. Okay, someone's asking Zeal 240 call option. Someone has bought Zeal 240 call option. One second, just let me open the Z Yeah. chart first. Okay. Z का आज तो न्यूज है ना, हाँ एनसीएल. सर, आज रिजल्ट आया था और उसके अलावा इसका जो है वो आज भी है। आज तो हियरिंग का जजमेंट है ना उनका. यस, 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 तो थोड़ा सा So, वोलेटाइल रहेगा, तो एक हाँ. स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही आदमी को इसको देखना चाहिए। Yeah. So we don't know what the like आपका ये, क्योंकि इसका जो ट्रेल है
जी का जो 240 सी है बहुत डीप है, नीचे 16 के पास है, तो करंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 22 ओके, इन दैट, बिकॉज इतना वो एक्सपेक्टेशन है ना मार्केट का, उसमें वो स्पाइक मूव है, तो राइट, 22 तक इट्स समथिंग, इट डिपेंड 16, दैट्स क्वाइट अ डीप आरआर फॉर अ option. You once ओके, you can keep trailing it accordingly, ओके, news based. ओके. I'll just take some more questions. Hello, sir. Sir, can we buy 45,000 call option? Local guide. Right now, our experts are not of the view of buying anything or selling anything. There is no, like, they But are just waiting and don't watching. buy. No, no, Yeah, don't buy. don't Don't buy. buy call No, option. no call buying right now. No call कुछ नहीं, buying. 15, like again I'll say last Thursday, Yeah, we showed कि वो हाइकन एशी चार्ट में भी आप ऑप्शन लगा के देख सकते हो कि कोई टर्न आ रहा है क्या ऑप्शन में, तो हाँ, नहीं आ रहा है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी बाय सिग्नल नहीं है अभी तक, तो right. just don't jump into a trade like that. Or the only for only thing which is which I would say कि क्योंकि एक्सपायरी है, और राइट नाउ द आरबीआई गवर्नर इज गिविंग हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस कि कोई भी अगर ऐसा कुछ न्यूट्रल It's ट्रिगर done. आता है, because PC lots is of done, sir. options, yeah, no, it's PC is going on. done. It's going on. Oh, Yeah, yeah. okay. So uspe the only thing I can see, and that's why what I could highlight is that the 19550 PCR, it's very neutral. Okay, इसको एक बार refresh कर लेता हूँ, एक second. Okay. 19,550 पीसीआर, अब थोड़ा ये बुलिश बायस हुआ है फ्रॉम 120 टू 140, और ये थोड़ा नीचे आया 3000, तो ये Hmm. जो है ना, ये एक है 19,550 स्ट्रैडल गोइंग एट अ प्रीमियम ऑफ 62 राइट नाउ. ओके, Yeah. विद एज लॉन्ग एज आई फील इट्स बिलो 75, वो ठीक है. Okay. 75 नहीं, सॉरी, 85, जब तक वो Okay. 85 के नीचे है वो Hmm. ठीक है, मतलब वो पूरा दिन स्क्वीज करेगा नेक्स्ट 2 आवर्स को उसको. एंड एनीवे, माय आई हैव अ वेरी क्लियर रूल दैट राइटिंग इन ऑन एक्सपायरी डेज शुड नॉट बी डन नेकेड आफ्टर 1:30. सो Hmm. नेक्स्ट 1 आवर जो चिल्लर या कुछ भी मिल जाए उसमें चलेगा, अदरवाइज नो, आई डोंट, इट्स अ टोटल स्क्वीज टुडे, कोई एंगल से इधर उधर नहीं करने दे रहे हैं. Exactly. Exactly. Viewers, just wait for some more time. हम लोग when the moment there is a level which comes into our expert's mind, there will be a call. So relax. Our main motive is so that you guys do not lose money. तो ऐसे कोई random trade देके आपके पैसे lose नहीं करवाने हैं हमें. So Yeah. we just So, wait for more Gaurav, time. just Yeah, one more highlight. You can see the 19600 call on my screen. तो yeah. ये वो continuous lower lows बनाता है, distribution lower lows, distribution lower lows. तो कोई signal नहीं है, at least from a bullish point of view, 19600 का call बोल रहा हूँ, which is 50 points away still. ये Hmm. it has to start sustaining above 35 at least. उसके पहले तो माना ये I यूजलेस है, अप डाउन स्पार्क मार मार के गिरा देगा, जीरो कर देगा उसको एकदम ये So right now, given the data, I think Rajbhai will also agree to this that we have seen more addition on call side in 19600 call. I think वेरी हैवी. 2.36 से 2.51 हो गया. I think we have added more 15 lakh या call option call 2.44. writers there. या So the situation on the upside, it's very clear that 19600 will be a brick wall for the bulls to cross. And even if it crosses, I think गौरव, yeah, 9600 तो दूर की बात है. 19600 तो चलो 2.5 करोड़ हो गया. इवन 19550 550. में भी देखोगे ना, तो Yes. उसमें ही 1.5 करोड़ क्या 1.4 करोड़, इफ आई एम नॉट या 1.3 रॉन्ग, आ 1.3 गया. करोड़, यस दैट्स राइट, 1.3 करोड़ वहां पे बन चुका है. तो हाँ, इट डजंट मेरे लुक. पास. यस, यस, इट डजंट लुक कि मतलब एक चीज तो है कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसे कॉल खरीद के करना चाहिए, तो द आंसर इज नो. ओके, पुट खरीदना चाहिए या नहीं, वहां पर मैं थोड़ा सा डाइसी हूं कि आई एम नॉट श्योर अबाउट कि पुट लेना चाहिए या नहीं, बट कॉल नहीं खरीदना चाहिए, दैट आई कैन से कि जब तक ओके, 620 के ऊपर नहीं जा रहा, नहीं लेने का मेरे को कॉल. और ओके, बैंक निफ्टी में मैं मतलब ये थोड़ा सा ट्रिगर आ रहा है कि बैंक निफ्टी में मैंने बोला कि ये डे लो टेस्ट करने की तरफ जा रहा है. तो अगर 44, क्या है कि आज ऑप्शंस थोड़े ज्यादा महंगे भी बहुत हैं. आप अगर देखोगे तो 44,600 का पुट इज रनिंग अराउंड 113. Normally it should be somewhere close to 70 to 75 rupees by this time.
तो इस वजह से क्योंकि ऑप्शंस के प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप सीधे सीएमपी पे आप इसको 108 रुपए में बाई करेंगे तो आपकी ब्रेक इवन ही आपका 44,500 आ जाएगा। तो राइट। अगर, हाँ, अगर मुझे डे लो के लिए खेलना है तो क्योंकि रिटर्न फिर काफी कम होता चला जाएगा, उस केस में शायद हम लोग 200 पॉइंट का एक स्प्रेड बनाकर कि हाँ 600 का पुट खरीद के 400 का पुट बेच दें, समथिंग लाइक दैट, इफ दैट इज पॉसिबल। अदरवाइज आई एम सी आई वांट टू प्ले फॉर द न्यू लो, ओके, एंड दैट इज जस्ट 100 पॉइंट्स अवे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब how to convert it into trade with very limited risk, so that is a bit problematic right now क्योंकि ओके ऑप्शंस के प्राइसेस बहुत ज्यादा है। ओके। सो व्यूअर्स, इट इज वेरी क्लियर। कॉल तो बिल्कुल नहीं खरीदना है अपसाइड के लिए। अवॉइड बाइंग कॉल्स। फॉर डाउनसाइड, फॉर पुट बाइंग, देयर इज अ Raj was saying कि he will wait for some more time because कोई व्यू वहां पे बन रहा नहीं है. So one thing is very clear that upside is capped and the target is on the downside. Like the trade that he is trying to find is on the downside. So anyone who is in the view of buying calls or something, please understand there is like for call buying, नो आंसर इज स्ट्रिक्ट नो फ्रॉम आर डेरिवेटिव हेड. सो कॉल बाय नहीं करना है आपको, ये बात बहुत क्लियर है. पुट साइड पे नजर है बट पुट साइड पे कुछ बाइंग सिग्नल नहीं बनाया अभी. वी डू नॉट, ही डजंट हैव एनी बाइंग like a buying trade which is coming into his head right now. So we'll just wait. I'm taking some more questions from the chat till then. Okay, sir, someone has been Biocon call buy at 11.4 and sold two two call two lots at 4.8. Basically 1:2 puts call spread किया है. 11.4 and 4.9.6 9.6 11.4 ₹2 का कॉस्टिंग है. तो कैन यू सी बायोकॉन? कौन सा है गौरव, दोबारा से बताएंगे? 270 और 270 है और 290 है. तो 270 कॉल बाय किया है एक लॉट, 290 का दो लॉट बेचा है. आई थिंक 1:2 कॉल स्प्रेड है एंड इट इज ₹2 आई कॉस्टिंग. थिंक I think he should hold. 2 rupees is not much for the given the volatility of the stock, and he has made a good trade, I would say. या हाँ, लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ ये होगी कि द वे स्टॉक मूव्स, या क्योंकि इनका डेल्टा जो है बहुत ही कम रहेगा, या क्योंकि उन्होंने ऊपर दो कॉल बेच रखी हैं, तो शायद इनको पैसा ना बने, बट यस अभी अपनी सीरीज बहुत बड़ी है एंड एनीथिंग मतलब समवेयर क्लोज टू 280 आई स्टिल बिलीव दैट स्टॉक शुड टेस्ट वंस अगेन, सो इन दैट सिनेरियो ही शुड बी इन प्रॉफिट, और जितना लेट होगा उतना इनके लिए अच्छा होगा। ओके ओके. I think this is perfect. I'm taking the other question. Just give me a moment. Okay, so Naresh sir, you can hold this spread. There's no problem. From that's the view from Rajdeepak. So you can hold your Biocon. Local guide, no, please don't. You cannot buy 45,000 call option. Clearly said. Sir, can we go for 19,600 call option? No, you cannot go. Trade any trade, sir. We'll wait for some trade. Tech Mahindra, someone has sold 1270 call option. So can we have a view on that? Tech Mahindra 1270 call option sold. गौरव, थोड़ा सा मैं बायर्ड हूँ आईटी पैक में, सो आई अगर दिनेश सर इस चीज को कॉल लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। Okay. Dinesh sir, what does the chart say? It's at least the 1270 strike option is not yet bearish. That's Okay, in sold. fact, He has yeah, sold. it's that's what I'm saying. No, the Uh, I can see the option charge not bearish. In fact, above 14 and a half, it's a clean Massive breakout rally. running towards 23. Yeah. Okay, so that should be, I don't know what risk management, or if it's a hedge trade or a naked option. So it needs a proper solid risk management. And I've been saying it from last 2 weeks कि the bank nifty जब तक muted है, weak है, IT Yeah. has to come to the rescue of nifty. नहीं तो Right. colossal dip आ जाएगा हमारे यहाँ. तो especially I would not do this if bank nifty is weak. Okay. So just That's 1440 के ऊपर नहीं रहना चाहिए, एकदम क्लियर. okay. Okay. Perfect. Next is okay, there are too many. Good. Just
Okay. PI industry 3700 call option. Someone is asking, can we hold or buy? I think PI industry was one of the biggest gainers today. Last expiry, I think Raj bhai had released a report on PI industry. वो cost पे ही अटक गया, वहां ना ऊपर गया नीचे गया, और I think यहाँ पे जाके वो काम कर रहा है अपना राज भाई, जो लास्ट वीक का लास्ट एक्सपायरी का व्यू था अपना। हाँ गौरव, क्या है कि रिजल्ट आया इसका काफी अच्छा हाँ, आया है। हाँ, और इसने ऑलमोस्ट 4,000 लेवल आज टेस्ट भी कर लिए, 3980 समथिंग का इसका हाई है। तो अगर कोई लेना चाहता है यहाँ पर, देन आई वुड से होल्ड, प्लीज, मतलब जस्ट गिव इट सम टाइम, हाँ, रिजल्ट का ठीक से इस पर आने दीजिए। बट राइट। हाँ, ओवरऑल थिंग्स नॉट लुकिंग नेगेटिव, ओके, बट दैट वुड बी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव एट सीएमपी, आई वुड अवॉइड। ओके, ओके। सो सी, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव अवॉइड। ऑल्सो व्यूअर्स जो पूछ रहे हैं हम कॉल बाय कर सकते हैं, हमने कॉल बाय करके रखा है, क्या करें? आंसर इज नो कॉल बाइंग फॉर टुडे। मतलब इट इज वेरी क्लियर, कॉल आपको बाय नहीं करना है। काम मतलब प्लीज, इफ यू हैव बॉट अ कॉल एंड इफ यू वांट अ व्यू, आवर एक्सपर्ट्स विल क्लियरली से प्लीज गेट आउट ऑफ द कॉल। सो मेकिंग इट वेरी क्लियर, कॉल ऑप्शन बाइंग इज नॉट सजेस्टेड फॉर टुडे। ये एकदम क्लियर व्यू निकल रहा है। तो एनीवन हु हैज एनी इंडेक्स कॉल और समथिंग, प्लीज आवर एक्सपर्ट्स विल ऑलवेज से नो। सो फॉर टुडे कॉल ऑप्शन में हमारी क्लियर कट राय है कि आपको अभी कुछ नहीं करना है। द ओनली थिंग द अभी के ओनली लिए नहीं थिंग है गौरव, अगर चीजें चेंज होती हैं तो वी या कैन सी। एग्जैक्टली, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर 19620 के ऊपर इफ वी सस्टेन देन वी कैन सी, बट फॉर नाउ देयर इज अ क्लियर कट नो व्यू ऑन, लाइक नो बाय कॉल ऑन कॉल साइड। Okay, I'll take few more questions till then. Yeah, industry is over. At least tell the numbers in English. Many people will. Yes, we are trying to say it in English only. Trippist Vipin 19500 put no. We have not sure asked to buy it right now. Wait, it's wait and watch time. Okay, Bharat Kumar is asking Wipro 410 call option. Dinesh sir, Wipro is actually Yeah. making another bullish pattern on daily chart, if I'm not So, wrong. so Wipro was covered on last Saturday in our Right. option के बाद. So उसका जो मिनिमम अपसाइड था वो हो चुका है, मिनिमम फ्रॉम Yeah. 420. यहाँ थोड़ा सा रेजिस्टेंस है 420-25 के जोन में, इसके ऊपर ठीक हो जाएगा. मतलब इट कैन कंसोलिडेट, बट ओवरऑल आप ट्रेंड देखो, मार्केट जब ऐसे दिनों में इतना बैशिंग होता है तो जो जो लार्ज कैप स्टॉक्स है, अनलेस इट्स कोई स्पेसिफिक, movements are very sluggish. So which call you said? 420, sir, and they had the money call. Okay, so I will be hourly first. So it's coming to a resistance. See, the call is also at a resistance of 9.25. If it starts sustaining above that, then you get a move till 11 in that. Needs to sustain above that. Trail is quite deep, near 7.5 for Okay. this. Yeah. Okay, now I think Nifty is just no कहीं mood to नहीं go जाएगा anywhere आज today. वो. आज वो बिल्कुल मूड में ही नहीं है कुछ करने का, एकदम. Yeah, बस एक चीज देखनी चाहिए हम लोगों को, गौरव, की जब yeah, लास्ट टाइम व्हेन वी स्टार्टेड, योर वोलेटिलिटी वाज समवेयर अराउंड 11.5. yeah, Okay, in last half an hour it has moved to 11.7, yeah. 11.65 currently. So the way it is gradually moving up, if it is, I would say spend another 10, if it is able to spend Hmm, even 10 minutes above 11.7, hmm. then perhaps we can look out for buying put. Okay, बट हाँ, बट जैसा अभी आप सब देख रहे हो कि पिछले आधे घंटे में इंडेक्स में तो कोई मूव हुआ ही नहीं है। right. हाँ, तो उस वजह से इंडिकेशन जो आ रहे हैं धीमे धीमे वो यही आ रहे हैं कि शायद अगर हमें जाना है तो पुट साइड में जाना है, बट कंफर्मेशन अभी तक कहीं पर नहीं आ रहा है। Okay, कोई बात नहीं, हम 3 बजे तक लाइव है, तो कंफर्मेशन तब तक तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो हाँ, मतलब एंड वी विल अंडरस्टैंड, फॉर अस इट इज, हम तो खुश होंगे अगर आप लोग ज्यादा ट्रेड करें, बिकॉज बीइंग ब्रोकर्स वी मेक मनी व्हेन पीपल ओवर ट्रेड, बट स्टिल वी डोंट वांट यू टू ट्रेड राइट नाउ, जस्ट होल्ड, वेट एंड वॉच मार्केट इट इज। सो प्लीज अवॉइड ट्रेडिंग राइट नाउ, द मार्केट इज नॉट गोइंग एनीवेयर अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपर्ट्स। सो टेक अ बट वेरी, गौरव, जो आपकी ट्रेड थी ना, जिसमें हम लोगों ने बात कर रहे थे कि 550 का, मतलब वी कैन गो फॉर शॉर्ट कॉल एंड पुट बोथ ऑफ 550 स्ट्राइक, या, so that is one trade we can still look at.
not, and again, because of the high volatility, we still have that theta intact. Yeah. So, as Dinesh sir also mentioned, the stop loss near 85. So that is one thing. Until unless we are not getting the directional bias. So if not directional, then non-directional. In non-directional, ATM short straddle, it's not wrong. Okay. Now 550 short straddle one can do, but Raj bhai, there is one एक जगह पे मेरे को आपका ध्यान डालना है. 196 पुट साइड की बात कर रहा हूँ मैं, based on a Hmm. data. 19600 put still has 80 lakh का OI, which is slowly seeing unwinding now. Okay. 19550 has 1.46 CR. अगर यहाँ से निफ्टी थोड़ा भी नीचे अगर सस्टेन कर गया तो these guys will be at risk again. अभी मतलब it has to be a relative comparison, right? Yeah. So 19550 call is having 1.2 crore shares. The data which I'm Yeah. looking at. 1.4 now. Okay, let me refresh the screen. Yes. It is at 1.4. मेरे में अभी भी उतना नहीं दिखा रहा है, चलिए जो भी सही हो. नहीं, मेरे में लाइव टिकर चालू है तो इट इज 1.4. हाँ, तो मैं ये कहना 1.46. चाह रहा था कि 19500 पुट में आपके 2 करोड़ शेयर है, 19600 कॉल में आपकी 2.5 करोड़ शेयर है, ठीक है. राइट. तो एज ऑफ नाउ जो शॉर्ट स्ट्रगल की बात हम लोग कर रहे थे, दैट ओनली मेक सेंस. आपका जहां पर आपने जो अभी जस्ट बोला कि आपके पुट में 19.4 करोड़ शेयर्स हैं, कॉल में स्टिल 1.2, राइट. या. एंड इफ यू लुक एट द चेंज, if you look at the change of last 1 hour, or I would say let's start looking at your last 30 minutes change. So that change has more into call side, not into the put. So people have written more calls than puts. अगर पिछले आधे घंटे का मैं डेटा देख रहा हूं तो मेरे पास 22 लाख कॉल के एडिशन है. वी हैव सीन एडिशन ऑफ 22 lakhs in call strike. I am again talking about 550 only, while in put that is somewhere close to 15 lakhs. So ये है कि हाँ, राइटिंग अब एटीएम में जो आपकी स्ट्राइक है, जो आपका व्यू है, मतलब जो आपके वो था कि 550 का शॉर्ट स्ट्रगल करना चाहिए, वो चीज ज्यादा रिलेवेंट हो रही है और डेटा में दिख रही है कि वो लोग वो कर रहे हैं, करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है. ओके. दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग मार्केट टू मूव एनीवेयर. 600-500 की रेंज में रहने का ही सोच रहे हैं, एटलीस्ट फॉर निफ्टी. बैंक निफ्टी का अगर हम लोग देखते हैं तो शायद बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अलग है. बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 44 इवन 700 कॉल में एडिशन है, पुट में क्लोजर है. राइट. और वो भी लास्ट हाफ एन आवर में जब इसने कुछ नहीं किया है. सो एज वी आर सेइंग कि हाँ, पुट वाले थोड़ा सा डर रहे हैं, पुट में जा रहे हैं. इवन यहाँ पर तो आपका 44,500 कॉल में थोड़ी राइटिंग जो है वो एज गुड एज योर 44,500 पुट. या. So Bank Nifty is clearly looking weak, as we have said earlier also कि हाँ, ये जो है यहाँ पर वीकनेस है. निफ्टी पर से it might still take some time. ओके. एक राज. गौरव या. गौरव या. राज भाई जो बोल रहे एकदम बुल्सआई है, क्योंकि रिलायंस हैज स्लोली क्रीप्ड अप बाय $17. ओके, तो रिलायंस का वेटेज इतना ज्यादा है कि वो निफ्टी को जो डैमेज बैंक निफ्टी कर रहा है वो थोड़ा संभाल रहा है उधर आज, और आईटी आज उतना डैमेज नहीं कर रहा है ना. सो दे आर मैनेजिंग इट टू होल्ड. बट बैंक निफ्टी इज एकदम ऑन द कस्प ऑफ स्कैरी ब्रेकडाउन अगर वो 44,500 नहीं संभालता है एकदम. ओके. बहुत स्कैरी ब्रेकडाउन के पोजीशन में. ओके. बट येट नो कंफर्मेशन येट, सो कांट रश इनटू समथिंग लाइक दैट. Okay. We have a user who has a viewer who has bought 43,000 put, that is monthly, 31st of Bank Nifty, 43,000 put monthly at 50 rupees.
सर अभी इस एक्सपायरी की बात कर लें तो बेटर रहेगा. ओवरऑल बैंक निफ्टी हैज अंडर परफॉर्म, बट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज समवेयर 4 to 5% डिक्लाइन इन इंडेक्स. इट्स लाइक अ लॉटरी टिकट. हाँ, सो वो ऐसे ही है कि हम लोग निफ्टी में बात करें कि अगर मैं 5% बीसीआर के लेवल से लेता हूँ तो मतलब 19,000 समथिंग, या अभी भी आप 19, यहाँ से भी सीएमपी से भी अगर मैं 4 से 5% की बात कर रहा हूँ तो दैट इज समवेयर वी आर टॉकिंग अबाउट 18,800 और लोअर लेवल्स. तो उतना दूर का तो अभी ऐसा कुछ नहीं इंडिकेशंस है कि हम मार्केट को उतनी बड़ी वीकनेस के टर्म्स में बात करें. बट हाँ, एक चीज है कि मार्केट में एफआई फ्लोज खत्म हो गए हैं, निगेटिव नहीं हुए हैं, बाइंग खत्म हुई है. अगर निगेटिव होते तो मैं शायद एक बार थोड़ा सा आपकी तरफ आ भी जाता, बट बिकॉज दे हैव पॉज्ड, दे हैवंट टर्न्ड सेलर्स. So राइट. because they haven't turned sellers, so as of now there isn't any indication कि market has turned weak. अगर आप देखोगे तो हमारा जो हाई है दैट वाज इन समवेयर क्लोज टू 20th ऑफ जुलाई. नास्डैक का हाई था वो भी समवेयर क्लोज टू 20th ऑफ जुलाई. नास्डैक जो है आपका 6 मोर देन 6% हैज डिक्लाइन. हम 2.5% ही डिक्लाइन किए ऊपर से टॉप से. तो यस, ओवरऑल इन द स्कीम ऑफ थिंग्स वी हैव शोन सम वीक, मतलब आई वुड से कि प्रॉफिट बुकिंग, not weakness, but it is part of the consolidation after a humongous run what we have seen in last 3 months. तो उसको मैं वीकनेस की तरह परसीव करूं, ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगी. Okay. So I think Deepak, you've got your answer. So like 43,000 put option is like a lottery call that you have purchased, right? Lottery put. So it's all आपको राज ने view दे दिया है. So it's all up to. Okay, we have a viewer asking any trade in Tata Power. Can Raj bhai any trade in Tata Power? Gaurav, give me 5 minutes, huh? I'll be back. Okay, okay, okay. Dinesh sir, can we check the Yeah. chart of? Well, Yeah. just in that 43,000 put, I would add one more point. We've been discussing week on week कि IVs are very crushed, right? Yeah. IV movement नहीं, and you're buying something which is monthly end, which is 21 days to go. In case there is a movement which is like what has been happening for the last 2 weeks, 2 दिन गिरता है फिर साइलेंट हो जाता है, 2 दिन गिरता है साइलेंट हो जाता है, तो आपका वो प्रीमियम एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज you will also have a theta decay working against you at that time. Right. So if you are not a hedge trader, you are not into option selling and all that, one should, when they are doing a deep out of the money put buying lottery ki tarah mat dekhiye, because it's not about $70, it's 70 into the lot size, into the amount of lots you are buying. Yes. So it's always money value. So such trade should be done in a calendar spread, that you manage a trade with a weekly sell and that buy, कीप इट न्यूट्रल, तो आपका जैसे कॉस्टिंग कंट्रोल में रहे, रिस्क कंट्रोल में रहे उसमें. Absolutely. और Absolutely. बाय सिंपल वीकली वन, प्लीज डू नॉट, और बाय एन एटीएम ना, अगर आपको खरीदना है इतना, आप अगर 3 हफ्ता के लिए बेरिश हो इतना नीचे, व्हाट इफ इट स्टॉप्स द क्लियरिंग एट 44,000 या 43,500, विच इज अ नीड 1,000 पॉइंट्स डाउन, पर आपको कुछ नहीं मिलेगा उसमें एंड में. Right. Right. Dinesh sir, any chart view on Tata Power? Yeah, Can we check the chart on Tata Power? Yeah. Someone asking, the one Mr. Rajiv Bansal is asking, any trade in Tata Power on C side, any levels to remember? So any breakout level that you can give about that level? Anyway, the stock has been in upside momentum only. So for me, I need to see the stock sustain above 241. Okay, उसके पहले मेरे को I would like to stay away now from it, even though it's trying to make a good momentum. At least let it give you a hourly close above 240. तब वो momentum में आता है towards 250 and a lot more. Basically today's high, because today's high was 241. You want to see it go up, because बहुत flat, because you see, last week वो गिरा था जोर से, तो this could, unless it doesn't give you a sharp momentum up, थोड़ा सा caution. And plus overall market में इतना जबरदस्त hitting है ना ऊपर से, कि looking at the long side थोड़ा सा caution लग रहा है फिलहाल एकदम. Okay. Okay, so I think Rajiv sir, right now it is yeah, Raj bhai, any derivative check on Tata Power? आपका कुछ view बन रहा है आपके? दिनेश सर इज सेइंग कि 241 के ऊपर ही मोमेंटम है. आज का हाई भी वही है, रिजेक्शन लेवल भी वही था उसका.
See, I believe अगर मैं बहुत ही शॉर्ट टर्म इवन टर्म में बात करूँ ना, तो भी मेरे को ये स्टॉक एज ऑफ नाउ इट सीम्स पॉजिटिव. माय इशू इज विद द ब्रॉडर मार्केट. और जिस तरह से स्मॉल कैप और मिड कैप चले हैं, अगर वहां प्रॉफिट बुकिंग आनी स्टार्ट होती है, दैट कुड बी द ओनली नेगेटिव व्हाट आई कैन सी इन टाटा पावर. अदरवाइज फॉर मी स्टॉक rest everything remain constant. Stock is likely to move further. And I would say कि until unless it is not closing below 231 or 232 odd levels, one should remain a buyer. I have a different opinion here. Okay. Just give me a moment. I'll take some. There was a question on buying Asian Paints call option, but I think Asian Paints, Raj bhai, आपने sell derivative view में, I think you have given a short side, right, on Asian Paints? We have been seller in the stock since Yes, 35. So but no it is buy. actually it is down. It is down by quite a big number. It is 90 points, almost 3% down है stock, and it has broken a crucial मतलब pre like इट्स ऑलमोस्ट जून के लेवल्स पे आ चुका है, जून के लो लेवल के आसपास आ चुका है. डजंट लुक गुड. So any view on Asian Paints for you? Anybody at least somebody who has bought call option, what should he do at this level? If he has bought, then wait for a couple of days, because the stock is at a very good support level, somewhere close to 30 to 20. But if it is moving below these levels, he should exit. At least आपके पास थोड़ा सा ये है कि अभी एक्सपायरी बढ़ी है, कि थोड़ा सा भी रिवर्सल आएगा तो चलेगा. बट इन ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स इस तरह के स्टॉक्स ज्यादा गिरते नहीं है. बट हाँ, क्या चलेगा? सो आई वुड से कि ये स्टॉक्स एट द बेस्ट 3350 3360 जा सकता है, और वहां से दोबारा से एक बार सेलिंग प्रेशर इन द शॉर्ट टर्म देखने को मिलेगा. तो जस्ट wait couple of days. If it remains above 30 to 20, then it's fine, otherwise exit. ठीक है राज भाई, दिस इज डन. आई विल टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस. कोई व्यू बन रहा है राज भाई? कोई व्यू बना दो यार, कुछ ट्रेड करवा दो. और 1 घंटा होने जा रहा है. मार्केट निफ्टी में ने तो फिर भी थोड़ा सा मूव दिया, दोबारा से उसी जगह आ गया. बैंक निफ्टी तो बिल्कुल नहीं हिल रहा है अपनी जगह. ठीक है. ओके हाँ. राज भाई, आईटीसी में बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं. पीपल आर आस्किंग व्यू ऑन आईटीसी. Gaurav, लास्ट just टाइम one also second. we Yeah. discussed. Yeah, We one second, said one second. I think Dinesh sir wants to come in. Yes, sir. Rajbhai, can you check the 44,500 straddle? 44,500 straddle. just a second. Almost 200 rupees, sir. हाँ, मतलब एज अ ट्रेड, यस इट कुड बी, यस वन कैन लुक एट. बट उससे बेटर कि सर, मतलब थोड़ी सी खुजली हो रही है सर, और कोई बात नहीं है. मैं मतलब इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि एक राउंड ऑफ प्रेशर जो है, वो अगर मैं छोटा सा, अगर मैं स्पॉट लेवल पे देखूंगा बैंक निफ्टी के, तो मेरे ख्याल से 700 को स्टॉप लॉस अगर लगा के देखा जाए ना, तो एक बार पुट की ट्रेड ली जा सकती है. बट आपके 500 स्ट्रेडल के लिए भी वो चीज उतनी ही फायदेमंद रहेगी, क्योंकि इफ मार्केट इज कमिंग डाउन, तो आप तो एक तरीके से 44 500 का आप कॉल शॉर्ट कर रहे हो, जिसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं बची कॉल ऑप्शंस में. कैन यू सी दैट सर? सॉरी, कोई टाइम वैल्यू नहीं बची है. इट्स ट्रेडिंग एट इंट्रिंसिक वैल्यू. So I was looking at 44,700 put for a, you know, to attempt a long in this, with, this as a 90 as a trail stop loss on 15-minute basis. 90 नहीं तो 85, ये वाला जो लेवल है, ये वाले लेवल पर इसको
in the at the money wala put hai. I don't want to go for a out of the money put with time in hand. So ये एक छोटा सा मुझे लग रहा है एक बनता है सर, सेंस बनता है आपकी इस ट्रेड का भी। ये 78 अब चल रहा है, अभी बहुत हाई है एक्चुअली 136, सो आई वुड कीप भाई अ मैं उस वक्त भी यही हुआ था ना सर, कि जब हम लोग बात कर रहे थे कि ऑप्शन प्रीमियम आर क्वाइट रिच। या वेरी एक्सपेंसिव। सो ये यस। 95 जैसा अगर जब तक ये होल्ड करता है और अर्लीस्ट टाइट अगर होल्ड करना है तो 15 मिनट बेसिस दिस आरआर इज क्वाइट फॉर if anyone is bearish, this is the level one should be looking at because above 44,675 फिर थोड़ा अप नच करता है। अभी 61,620 है, सो 55 पॉइंट्स का रिस्क है बैंक निफ्टी में फिलहाल। अगर किसी को मतलब मैं अगर किसी को केवल एक ऑप्शन में खेलना है तो 44,600 का 80 रुपए का पुट चल रहा है। हाँ मैं अब यहाँ पर एक बार ये मैं सोच सकता हूँ कि इसको आप 80 रुपए में लेकर अगर आप 44,400 का 25 रुपए में बेचते हैं तो आपकी क्यूमुलेटिव कॉस्टिंग सिर्फ या 65 रुपए। एग्जैक्टली, मैं भी वही बोलने वाला था। डू अ पुट स्प्रेड 44, मेरा था 44,700, 44,500, आप 46 वो भी चलेगा एकदम वैसा, वो भी ठीक ही है हाँ, तो एकदम गौरव उससे। आप ट्रेड मांग रहे थे, देखिए दोनों तरफ से ट्रेड आ गई है। तो राज भाई आप आपका ट्रेड बता दीजिए, ये आपका रिकमेंडेशन है। मैं अभी 44,600 का पुट बाई करने के मूड में हूँ और उसके सामने मैं 44,400 का पुट बेचूंगा। ओके, तो राज भाई आप बोल रहे हो कि 44,600 का बैंक निफ्टी का पुट बाय करना है, विच इज एट 73 राइट नाउ, इट इज ट्रेडिंग एट 73, एंड 44,400 का पुट सेल करना है विच इज 22। बेसिकली आप बोल रहे हो कि 50 रुपीज के आसपास का कॉस्टिंग हो जाएगा, राइट? राइट। Okay, so viewers who want to play, who wanted a trade, the trade from Raj Deepak, our derivative head, is buy. I'm writing in the chat. Buy Bank Nifty buy 44,600, put near 70.75, and sell 44,400, put near 20.22 by Raj Deepak. ओके, अंडरस्टैंड व्यूअर्स, यहाँ पे आपको नेकेड नहीं करना है। इट इज गिवन, इट हैज बीन गिवन, इट इज गिवन, it is given in a put spread thing. So put spread में buy करना है, you have to buy 44,600 put near 70.75 and sell 44,400 put near 20.22. That will make a cost of total 50 points. That is a risk of 750 rupees per set. That is the trade from our derivative head, Mr. Rajdeepak Singh. No naked put buying. It is a put spread. Buy 44,600 put, sell 44,400 put. Total cost 50 rupees, and that is the trade for Bank Nifty right now. Okay. So Rajiv Bansal sir asking, okay, you're holding one UBL future at 1566. Raj bhai, UBL future, any view on UBL future? हाँ, because he is holding in future, then I would say Yeah, it keep went a to stop. 1600 plus. So he's asking ki what to do. I would keep a stop loss somewhere around 1520 if it is in 1520. future. Okay. Yes. Rajiv sir, the stop loss up to 1520. That is the stop loss right now, which you can hold. Okay. View on ITC. Okay. ITC. A lot of people asking about ITC. Raj bhai, ITC पे आपका क्या view बन रहा है? आईटीसी का हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आईटीसी का जो शॉर्ट टर्म टॉप है वो बन चुका है। आई विल नॉट बाई इट। देयर इज एग्रेसिव कॉल राइटिंग व्हिच आई बिलीव इज लाइकली टू कंटिन्यू। जो भी इसकी न्यूज आई थी, दोस थिंग्स हैव बीन डिस्काउंटेड, people haven't liked it, that's why stock has came from 500 to 450, but still even at 450 I will not buy. I will look at this stock only somewhere close to 420 430 levels. Okay. So as of now, it's not a buy. I'm not saying sell, but Okay. if I have to buy, I will wait towards 425, 430 levels. Then only I will look into it. Okay. Okay. Makes sense. Makes a lot of sense. If another one is Gale 121 call option someone has bought. Yeah, Dinesh. I thought I will not take your view on ITC.
See, my particular view right now in the FMCG index is that during market moments like this, defensive sectors do very well, which is FMCG, which is the always been the defensive side to go. But ITC का कुछ दूसरा ही कहानी चल रहा है, क्योंकि जब सब डिफेंसिव FMCG म्यूटेड टू वीक थे, ये चल रहा था. अब बाकी सारे FMCG चलने लग गए हैं स्लोली स्लोली. तो it's a full overall FMCG sector looking good. I would not like to go bearish on them right now. Okay. Makes sense. Okay, makes sense. Gale 121 call option. ये लास्ट वीक भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इफ यू कैन रिमेम्बर. याद है कि किन्हीं के पास शायद 6 लॉट थे. तो I have said that here stock is good, but because he has bought in options, उनके अगेंस्ट में थीटा है, and we also asked him कि हाँ थोड़ा सा अगर क्वांटिटी कम कर लें तो बेटर रहेगा. सर इसका एक मेजर रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 120. अगर ये 120 के ऊपर निकलता है, then we should expect a fresh up move. Otherwise, from around those levels, we might see another reversal here. तो यहाँ पर I won't suggest you to sell. Momentum is there. Stock is moving up. Wait for a couple of days. Any day if you'll see stock is reverting before 120 itself, it would be better to close your positions. Okay, but he has bought a call option 121. हाँ तो क्या हुआ, मतलब आप अगर 119 या 120 पे भी आप निकलते हैं तो दैट वुड बी ग्रेट ना. Okay, works. ठीक है. Next is someone has got DLF futures. Oh God. 492, and I think DLF is looking thoda weak. Raj bhai, any view? DLF का एक फुट बेस है 480. अगर जब तक ये इसके ऊपर है तब तक ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि he has played in futures, so for him very small stop loss has to be considered. Yeah. So हाँ, तो जो परसों का लो है that is somewhere around 482. Yeah, 482.65 spot में बोलो. Yes. So I would keep that in my mind and I will trade accordingly. He has bought around 492, right? Yeah, 492 buy. हाँ तो अभी भी 491 चल रहा है. 490.60 is CMP. Not looking that bad for me, but हाँ इसमें मोमेंटम आई वुड एक्सपेक्ट अगर ये दोबारा से 494 के ऊपर आता है तो. बट कंसीडरिंग प्रमोटर ने 502 में सेल किया है, सो आई बिलीव दैट ये स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा. तो अगर इन्हें कुछ करना है तो चाहे तो 500 का कॉल ऑप्शन बेच के अपनी थोड़ी सी कॉस्टिंग कम कर सकते हैं और उस केस में 485 पे स्टॉप लॉस लगा के छोड़ सकते हैं. ओके, मेक सेंस. कॉल ऑप्शंस में पैसा रहता है. तो अगर मैं DLF का 500 का कॉल ऑप्शन देख रहा हूँ तो दैट इज समवेयर अराउंड 10 रुपीज. तो अगर ये 10 रुपए का बेचते हैं ये कॉल ऑप्शन और 485 पे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो दैट शुड वर्क फॉर हिम. ओके, परफेक्ट. नेक्स्ट इज SBI card future September 860. September, not August, September. I would hold this stock as of now and 850 के नीचे I need to exit. 850. Okay, works. Next is Ashok Leland. View on Ashok Leland. No view at CMP. Dinesh sir can. Dinesh sir, any view from chart? No, it's among the strongest of the auto stocks right now, you know. Yes. If I were to go long in auto, it would be only this. Not touch any other auto stock currently because थोड़ा सा auto sector tired लग रहा है, you know, after a good run. This is the only one standing out. But again, you know, overall market sentiment इतना depressing है कि to go against the larger trend थोड़ा सा अब डर लग रहा है. So no, wouldn't say anything. Okay, so I'll just give it a skip right now.
Okay, someone about Hindalco 470 call and sold 480 call. Okay, 1:1 call spread on Hindalco. Someone has done, sir. Sir, if anyone has to form a call spread, please don't make in such a small interval. 470, 480, if you'll make, even if your stocks will move up, you'll not be able to make money. Yeah, From the risk reward perspective, it might be look good, but it doesn't make sense, sir. You have to wait till expiry, and then only you will be able to see if you are going to make money or not. So okay, if ever you want to, anybody wants to make spreads, then at least, and in stocks where the volatility is high, then at least give something for the options to gain. आपका जितना 470 का बढ़ेगा उसका करीब टू थर्ड तो आपके सेल ऑप्शंस का ही बढ़ जाएगा, तो इवन इफ स्टॉक विल मूव अप यू विल नॉट बी एबल टू मेक मनी. right. That's right. हाँ, तो मतलब इसको मैं ये भी नहीं बोल सकता कि आप हटा दीजिए, रख के रहिए, क्योंकि आपकी कॉस्टिंग इतनी कम है कि इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. Right. That's right. I'll take some other ICICI Prudential. We do not cover any ICICI group companies, sir. So extremely sorry for that. Okay. Cipla views. Pharma. Pharma has been the talk of the town this week. So I have been positive for pharma for last 3 months. Now at CMP, there are some signs, and I believe Dinesh sir has been telling it that it is a bit dicey now. So It kindly is advise that range. okay. Even for the players, important players like Dr. Reddy's and other top pharma companies as well, Rajbhai. Gaurav, I understand your love for doctor, but but stock surpassing above 6,000 levels is something I don't see Okay. in the short term. So yes, one of the biggest outperformer in pharma when this stock was one of the first to move, and has moved quite this month, or I would say already made a life high, fresh life high. Okay. But at MP buying is not something. Let it trace a bit. थोड़ा सा नीचे आता है, कंसोलिडेट करता है, then we look at it once again. Okay. Next, okay, I just missed out. Yeah, Arvind sir, it's a boring market. कुछ बन ही नहीं रहा view, but there's only one view given by our expert, that is buy 44,600 put option, sell 44,400 put option, 1:1 put spread, which was costing around 50 rupees. Now it is costing around 51. मतलब it is at cost, but yes, we are seeing Bank Nifty near 44,600, flirting around 44,600 level. 44,600 से 44,620 आ जा रहा है वो बार बार. So there's a lot of flirting going on. I think moment it breaks 44,600, there will be some downside moment. Until then, we'll have to wait. Rajbhai, you on Larsen and Turbo, sorry, LNT basically, 2,700 call option. Someone has bought at 25 rupees. He has bought. Yeah, bought. Uh, I wouldn't bet on that much. थोड़ा सा Okay. हो सकता है, बट क्या है कि मैंने एक बार और किसी ने कॉल ऑप्शन सेल किया था, उसके बारे में पूछ रहा था, तो देन आई सेड कि बिकॉज द बायबैक प्राइस इज समवेयर क्लोज टू 3,000, स्टॉक विल नॉट मूव मच, एंड एक छोटा सा गैप बना रहेगा from that buyback price. So at the best, stock can move towards 2750, but that will be enough to make your options, or you will be able to money through that your option. I'm not quite sure about that. So you can have a small stop loss in that option, and trade accordingly, but Okay. better to exit. Okay. Berger, view on Berger Paints. Dinesh sir, I think you cover this stock. I know you cover this stock very closely. Berger, Asian, Bharat Forge, these are your favorite ones. So Berger Paints is, again consolidating. Quite a big consolidating portion happening out here. Once it starts sustaining above 715, we can expect a golden run in it. Continuation. ये काफी अच्छा रन है, देखो यहाँ कंसोलिडेट चलता है, कंसोलिडेट चलता है, कंसोलिडेट फिर कंसोलिडेशन में.
So Right. consolidates and moves up. You need patience. It's a very strong stock right now. Okay. Yeah. But let Okay. that consolidation get over. Don't Okay. rush in. इस समय especially as a derivative side की बात कर रहा हूँ. Going long, bullish on stocks can lead to a poor result or a loss because overall trend बहुत मार रहा है ऊपर से. So be very careful with what you do. Right. 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 I think one of our viewers saying market is not going anywhere. Let us wait till 2 p.m. for any movement. That's right. That's what was expected. इसीलिए no buy call on Nifty in neither anything. Bank Nifty only a 50-point spread दिया गया है. That's a very minuscule risk because it is only 750 rupees per lot. So even we are waiting ki which side the market goes. That's the case. That has been the case today. And we had policy, तो वो action सुबह ही हो गया. At least we saw a 100-point dip from the top. So let's see whether the market go after 2 p.m. For now, we just waiting and watching. Okay, someone has bought Rajbhai. Someone has bought. Okay, okay, he's asking your view on HDFC Bank 1650 call option. I know you are still. You last two sessions back you had said that HDFC Bank is still very confusing and not giving any confidence, or is not giving like it is just sideways, and bank nifty ka direction will be decided by the stock itself. And any change in that, Rajbhai? No, with 35% weight of the stock and index, Bank Nifty, this is something which is quite annoying, I would say. Despite all the positive news, it wasn't able to perform. Right. But I would say once its stock surpassed your 1655 this time, then it can move once again towards 1700 odd levels. बट क्या Okay. है कि ये जितना टाइम कंज्यूम कर रहा है उसमें अगर कोई ऑप्शन से प्ले करने की कोशिश करेगा ना तो उसको थीटा में उसका का सारा लॉस हो जाएगा. तो इट्स नथिंग लाइक कि स्टॉक इज निगेटिव, इट्स मोर ऑफ ए कंसोलिडेशन. जब एचडीएफसी बैंक का ये डिमर्जर मतलब मर्जर हुआ तो सेबी का रूल है, एमफी का बल्कि रूल है कि कोई भी म्यूचुअल फंड किसी स्टॉक में 10% से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता. और Right. एज इट मींस व्हेन दोनों स्टॉक्स थे तो बोथ एचडीएफसी एंड एचडीएफसी लिमिटेड पुट टुगेदर देयर वेट वाज इन द इंडेक्स वाज क्लोज टू 14%. or now they have mutual funds also they have to come down with their holdings. So I believe that this is a temporary phase. Next leg of bank nifty has to be triggered by hdfc bank. I don't see any other stock which can let the fresh up move. But for this to move above or to show us any indication, that has to move above 1655 or 1650 levels. वहां पर जाकर एक दिन स्पेंड करता है, then I'll buy this stock once again. Okay. Okay. Nifty में थोड़ी जान. I think Reliance is the one who's making it move out. या दिनेश जी ने बोला ना कि इसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं मार्केट को, आप देखिए. हाँ, Reliance days high पे है. Reliance at days high right now. 2545.55. And Nifty is near 19600. 19587 is the level in Nifty. I think so. I think वही there है was राजभाई. some आई थिंक ऊपर में वी कोई हैव टू फ्रीक स्टार्ट ट्रेड वेटिंग. हुआ है टाटा मोटर में अभी. सडनली कोई फ्रीक ट्रेड हुआ है. इट्स spot has made a low of 598 and back to 620 पूरा. राज भाई आप चेक करो, आपके डेटा में कुछ ऐसा आ रहा है क्या? क्या सर, टाटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. टाटा मोटर में कोई फ्रीक ट्रेड हुआ है लगता है. बस 6 598 का नीचे का लो मार के बाउंस मारा है. सर फ्री ट्रेड नहीं, 3.5 करोड़ शेयर आए हैं इसमें. यस, यू आर ओह, एब्सोल्युटली राइट. हाँ, तो एकदम साढ़े तीन सडन. करोड़ शेयर किसी ने बेचे हैं और उसका मार्केट ट्रिगर हुआ है. ओके, ओके, गॉट इट वहां से क्योंकि आया पूरा एक वन हाँ, साइड. कोई बड़ी ब्लॉक डील हुई इस स्टॉक में ड्यूरिंग द डे. ओ भाई साहब, 598 से it has come to 620. It was at what? It was at 614. It went to 598. It was a very big let streak me trade. let me show it on screen ना. लुक एट द Yeah, वॉल्यूम. yeah. 3.5 करोड़ शेयर. The massive freak trade that happened in Tata Motors. Yeah. So normally what I personally believe, if some
trade like this happens, then stock will take some time, but retest those levels. So uh, that an This is this indication is for this me is a that I should have massive thing. long Tata Motors. This is a And massive. today's, yes, it's quite massive, sir. Dinesh Given sir. the lot size that this stock has. Mm. Okay. So let's move on. Vipin, in Bank Nifty, it was clearly said take the spread and nothing else. I think 50 point was the risk. I think 50 point is normal risk for index like Bank Nifty. If you have taken any other trade, then let us know. We can tell you what to do. But from our end, it was only 44,600 put buy, 44,400 put sell. Total costing was 50 rupees. Right now it is at 42. The 8 rupees loss is going on in that trade. That's not a massive loss. But is there any other trade you have taken? So you can let us know about that. Uh, Chirag, right now, 19,550 put option. Our derivative head is of the view that Nifty will not go anywhere. There's no point buying anything. Call option can be taken only if Nifty sustains about 19,620. So right now, there's no view there. Okay. We only cover FNO stocks, so no Jubilant Pharma, no Subex. Sorry, guys. Which is was running, sir? Your opinion, which was running at? Okay. Nishad Patil sir, I think you're talking about options ki baat, which Dinesh sir had taken on Wipro. He has already given his view that the chart check that he had done on Saturday near 408, Wipro has reached 420. The minimum target has been done there, so not taking it here. Okay. Okay, Dinesh sir, Rajbhai, any view on India Cements? I think the stock has come out of band today, and I think it's trading with some good momentum. Last week we discussed India Cement Yeah, in that's the right. meeting, and I was quite bullish, and it has given a humongous move from 215 to 240 now. अब हिम्मत के बाहर हो गया है और कुछ नहीं That's बोलूंगा इसके अलावा. If someone is still holding, uh, there could be further upsides. I am not denying that. But fresh entry, I'm sorry. Now I don't have the guts to say buy at current levels. okay. I think Rajbhai, right now Nifty again reversed from 19, I think 850 ka kuch higher, 580. I think Nifty went to 588, 590 level, and there's a huge. Okay, Dinesh sir, can you just get the 15-minute chart of Nifty on the screen? Yeah, here it is. Nifty 15 minute. Just put the volumes in. ये तो अच्छा फ्यूचर चार्ट डालना पड़ेगा. नहीं, spot chart नहीं, just get the volume in. स्पॉट में वॉल्यूम नहीं आएगा ना इंडेक्स. Wait, I'll share it. Let me share my screen. Interesting thing that I've. Can you see this? Is my screen visible? Yeah, screen is visible. Do you see this volume bar, sir? Here, 42.26 million in this 15 minutes. इसमें टाटा मोटर्स का तुम्हारा आ गया है ना. निफ्टी हाँ. का एक शेयर है टाटा मोटर्स, तो उसमें 3.5 करोड़ शेयर का जो हुआ है, तो Okay. 350 मतलब आउट ऑफ 42 4.2 करोड़ 3.5 करोड़ तो आपका टाटा मोटर्स का ही हो गया. Okay. So nothing else, right? Okay. Yeah, Usually there such is a massive उसके spike. अलावा उसके अलावा गौरव यू सी सीएनएक्स आईटी काफी रिकवरी मारा है. सो वो भी है ना, वेटेज है Yeah. उसका. उसका भी वेटेज से पुश हुआ है थोड़ा ऊपर. Okay. So I thought some unusual thing happened here. I'm stopping my screen. No, Share. unusual तो हुआ ही है. You are absolutely right. An unusual thing has happened, but Yeah, it's a massive spike. yes. Either somebody has bought it or somebody has dumped it. I believe if someone has dumped it, that's why your uh, price has moved till 598 in Tata Motors. अगर खरीदा होता तो बहुत ऊपर रहता, राइट. Right. वो निफ्टी का टाटा मोटर का कोई हेज ट्रेड भी होगा, लाइक लॉन्ग वन शॉर्ट वन, तो पूरा एक साथ फुट गया है किसी का. Absolutely. Okay, let's move on to our viewers. They are waiting patiently for something. Sorry, viewers, आज कुछ बन नहीं रहा है trade. It is
just for the sake of giving trade, we don't give. We don't Exactly. We like. don't want to give trade just for the sake of it so that you guys trade. मतलब वैसा कोई lottery ticket नहीं है. There is proper analysis. So we are not giving any random trades to you. So just not. There's no trade right now. मतलब कुछ बन नहीं रहा है. मतलब Nifty is in that 30 point band, and in that 30 point band options doesn't work well. अच्छा Okay. दिनेश सर, एक बार जरा स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट लगाइए, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स एंड निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, एंड इट सीम्स लाइक दे आर कमिंग अंडर प्रेशर. स्मॉल कैप इंडेक्स हैज मेड अ फ्रेश लो, मतलब वो जो सुबह के डिक्लाइन के बाद, सो इट कुड बी अ स्टार्ट. एक सेकेंड, हाँ, जस्ट लेट मी Same जस्ट. with the mid cap nifty also, almost 2 hour low. मैं शेयर करता हूँ. हाँ, आप आप शेयर लोग. करें ना प्लीज. So viewers, this is your निफ्टी मिड कैप इंडेक्स. तो अगर हमने देखेंगे तो ये सुबह का जो ये मूव था जिसमें पूरा मार्केट गिरा है, उसके बाद से ये भी बिल्कुल रेंज में चला. पहली बार ये, मतलब ये 2 घंटे से करीब 11 बजे के बाद का ये अभी इसने लो मारा है. एंड सेम थिंग इज विथ स्मॉल कैप. तो ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है. सो इट्स नॉट अ पॉजिटिव साइन ऑब्वियसली, एंड आई स्टिल बिलीव कि यस वी शुड रिटेस्ट द लोज. तो शायद इसको देखते हुए, और एक हमारे बीच में सिर्फ मार्केट के और इसके बीच में एक रिलायंस खड़ा हुआ है. द पॉइंट वी सी सम वीकनेस कमिंग इनटू रिलायंस, जो कि नहीं है, वो अभी भी हाई मार रहा है. तो Raj bhai, getting very interesting data. आप निफ्टी 19550 कॉल ऑप्शन कॉल साइड का ओआई देखेंगे, 1.4 करोड़ से 1.1 करोड़ हो गया. 30 लाख राइटर्स हैव बीन वैनिश्ड. We are seeing small, like slowly, 19600 call writers are covering because 2.52 से 2.45 हो गए हम लोग. So I think we can keep this thing on radar right now. यस, बट आपके 19,600 के कॉल में अभी भी कोई कवरिंग नहीं मिल रही है. एंड ये पूरा का पूरा रिलायंस, और मतलब आई वुड से इट वाज मोर ऑफ इंडेक्स मैनेजमेंट जो चल रहा है. Yes, but थोड़ी कवरिंग मुझे दिख रही है. मतलब I can see writers running away. At least 19550 में तो considerable हो गया है. There is more than 10% we have seen covered there. 19600 is what we have to watch out for. यस, 19,600 में इन लास्ट 1 hour योर पुट्स हैव बीन रिटर्न मोर देन योर कॉल्स. Yeah, Raj bhai, which I could not get you there. मतलब पिछले 1 घंटे में 19,600 पुट में ज्यादा लिखा गया है, पुट Yes, ज्यादा लिखे गए हैं विज विज कॉल. yes. बट योर I think we ओवर, can keep this on radar for next 15 minutes. Matlab, there's no trade that can be seen, but I think we can have this on our screen right in front of our eyes because given the data 19550 में जो data change दिख रहा है, they can push the market. These writers can push the market towards 19600. Then we can see what happens. राइट. Okay, coming back to the audience, sir, Kotak 1840 CE पे लिया है. Okay, Raj bhai, 1840 call option at 35 Kotak. कोटक is something where despite all of my efforts, I am not able to make up whether I should trade positive in this stock or negative ever in last 4 years. I'm not saying कि कोई अभी की चीज है. Stock has been largely range bound, hasn't done anything with the market. तो अगर मैं सिर्फ इसके डेटा पॉइंट्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो इसमें बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग है. Right. अब ये अपने सपोर्ट के पास आ रहा है, दैट इज 1800, बट दैट इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल लेवल, नथिंग एल्स. कि Right. 1800 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, एंड दैट्स इट. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इजंट एनीथिंग व्हिच आई कैन टर्म कि हाँ भाई इसका ये सपोर्ट है. राज भाई तो निफ्टी, राज भाई निफ्टी ध्यान दो. 600 आ गया भाई, 598. 598. Nifty is now it is now we can have something here.
I still not getting that vibe. Gaurav, मतलब I wouldn't Well, say I'm just कि saying कि अब तो कुछ बन रहा नहीं, but data बोलते हैं ना, data never lies, and data was showing some covering in at least lower strikes. Now let's see whether 19600 shows any covering or not. और else वो वही होगा, यहाँ पे टच करके वापस नीचे आ जाएगा. तो I think this 15, दिनेश sir, any what is your comment on this? Till we are below, 19,600, 1020, and just tick nahi. You need to sustain Yes. above it to think about going bullish. Okay. नहीं तो it's like a in gas balloon है, वो फिज हो जाएगा वापस. Okay. बल्कि Okay. यहाँ पर अगर मुझे नेगेटिव खेलना है तो मेरा रिस्क वर्ड बहुत अच्छा है कि मैं 19,600 Exactly. का 28 में खरीदूं और मैं 40 रुपए का या 40 रुपए का ही स्टॉप लॉस रहेगा और देखते हैं क्या होता है. बट एट करेंट जंक्चर आई वुड बी बाइंग पुट देन, क्योंकि Okay. व्यू नहीं चेंज हो पा रहा है. उसमें 2.5 करोड़ शेयर हैं. आई डोंट सी दैट गेटिंग रीच. 2.35 हो गया राज भाई, 2.52 से 2.35, seem approximately 10% reduction. And 19550 जो 1.4 करोड़ थे वो 99 lakhs हो गए अभी. Again, you are absolutely right, but from where it is coming, you can see it's all about Reliance, right? Yeah. It's all about Reliance. कि Reliance जो है वो चल रहा है और Reliance का भी 2550 is very very crucial. Previous high is somewhere close to current levels only. Yeah, I think it's Reliance and some contribution. I From think you're IT, lifting. IT, IT, Yes. IT, Reliance and IT. हाँ मतलब I would stick कि 19600 now it's giving a good risk reward for me. I will So enter any it. trade, Raj bhai, it is at 30 rupees right now. 19600 put is हाँ at 30. yes, we राज can भाई get ने it to 40 rupees राज पे भाई ने stop loss take बोला कर और सकते हैं. वहां से 20 पॉइंट साफ हो गया. हाँ बात हुई. अभी अभी भी पुट ऑप्शन उस तरह से बढ़े नहीं है. जब मैंने देखा था 28 रुपए का था, अभी 30 रुपए का है. 2 ही रुपए बढ़ा Yes. है. So Raj bhai, any trade for our viewers on Nifty from here? Yep, we can look at buying put now. Okay. So This viewers, is a good. 19600 put near 30 rupees is the put buy near 30 rupees. Yes, 28 to 30, right? Raj bhai, आप 20 30 बोल रहे थे. So 30 rupees you can buy with a stop loss of Raj bhai 40 के आसपास का है. सॉरी 40. मतलब ये तो नहीं नहीं बाई कर रहे हैं भाई. तो 15 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना. बट बात करते करते देखिए 35 रुपए का हो गया. 35 हो गया वो, राइट, दैट्स राइट. बट अगर किसको फिर भी घुसना है तो क्या इज देयर अ ट्रेड राइट नाउ और यस ही स्टिल इट है. मतलब बल्कि अभी तो मेरे ख्याल से 550 का भी पुट जो है आपका सेंस बनाता है इस वक्त. ओके. तो 550 और 17 रुपीज राज भाई. हाँ लिया जा सकता है. ओके बाय 45 हो गया राज भाई. 19600 पुट इज एट 45 रुपीज राइट नाउ. अगर किसने सुना होगा and someone would have bought right now, I think would have made money, but it just went in a flash. To we'll not consider this as a proper trade from us. But anyone who has made it, Raj bhai, any targets from you for that strike? आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 550 के आसपास एक बार निफ्टी आएगा तो दैट विल बी द टाइम टू बुक प्रॉफिट. Okay, okay, it is at 42. The reason why you are our derivative head, मतलब it is not easy to go contra here. 19600 put at 27, आपने spot किया 30 and now it went to 45. Now it is at 40 right now, trading near 40. तो अगेन राइट नाउ अगेन अभी वापस छोड़ देते हैं हम लोग शायद. हेलो. आप मतलब मेरा जो थोड़ा सा वो आ रहा है. आप अगर बैंक निफ्टी देखोगे ना, निफ्टी ने हाँ. हाई मारा. बैंक निफ्टी दिनेश जी भी पूरा मतलब आई एम प्रीटी श्योर दिनेश जी विल एग्री विद मी कि देयर इजंट एनीथिंग व्हिच इज सजेस्टिंग बाय इन बैंक निफ्टी. सो राइट. विदाउट बिल्कुल नहीं, बैंक निफ्टी बिल्कुल आई कोई विल भी नॉट. एंगल से बाय नहीं है स्क्रीन में आज, कोई भी एंगल से. और जैसे मैंने बिगनिंग में बोला ना, व्हेन पैटर्न्स टेंड टू फेल, यू वन शुड बी वेरी वेरी कॉशियस. न्यूज आ रहा है, पैटर्न स्ट्रक्चर फेल हो रहा है, दैट्स द टाइम बहुत जबरदस्त कॉशन का जरूरत होता है मार्केट में एकदम. दैट्स राइट. सो राज भाई 19550 पुट और अभी we'll just avoid it. 550 put is at 15 rupees, right? Yes, that's right. Not much to lose, I would say. Yeah, but why to lose that much also? This is my question. See, that is something one should ask option buyers. If you want a trade, that is something trading around 15 rupees.
अभी बात करते करते 14 रुपए का हो गया, हमारा पुट ऑप्शन दोबारा से 36 का हो गया। बट जो व्यू है उसके हिसाब से आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद एक बार दोबारा से 550 दिखाई दे हमें। ओके, तो फिलहाल के लिए जिन्होंने जिन्होंने ट्रेड कट कर लिया, आई थिंक देयर आर मेनी हु बॉट एट 28 एंड सोल्ड एट 40 44। सो आई थिंक अगेन इट्स वी वोंट कंसीडर इट बिकॉज़ इट वेंट इन अ फ्लैश। मतलब वो इसको पांच, मतलब इट इज स्कैल्पर्स मार्केट जैसा हो गया है, तो 5 मिनट में ऊपर नीचे। Okay, I'll take some more question because again Nifty ने थोड़ा spike दिया, नीचे आया, वहां से ये निकल गया। Okay, someone has put Sun Pharma at 1140 call option. Is it Sunil Patel sir? Is it call option or put option? Can you just let us know? सर स्टॉक इजंट नेगेटिव, इट्स ओनली कि आपका जो मार्केट में छोटा सा प्रेशर है उसकी वजह से है। बट यू आर टॉकिंग अबाउट इफ 1140 कॉल, देन आई बिलीव यू हैव बॉट इट अर्लियर आल्सो बिकॉज़ इट राइट नाउ इट्स आईटीएम। Okay. तो और इस वक्त फार्मा में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग लग रही है। अगर आप मेरी स्क्रीन देखोगे तो सारे के सारे स्टॉक, ऑटो फार्मा, बायोकॉन, सारे स्टॉक्स डे लो दिखा रहे हैं। Yes, तो आई वुड डॉक्टर रेड्डी भी से 550 आ गया है, वो मेरे स्क्रीन पे है, बस एक ही फार्मा। तो अ, थोड़ा सा अवॉइड करो फार्मा में इस वक्त लॉन्ग जाना। अगर है प्रॉफिट में है तो बेटर टू बुक आउट। Okay, so we can wait in pharma. Okay, next is और बैंक निफ्टी 44,600। okay, 19600 पुट राज भाई 50 के आसपास आ चुका है अब। 19550 20 rupees. I think you had said nothing much to lose at 15. It is at 20. So anything that you will suggest here? जिसको लगता है, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग अनदर एटलीस्ट 20 पॉइंट्स डिक्लाइन इन निफ्टी। उसके बाद देखते हैं दोबारा से क्या व्यू बनता है। बट एज ऑफ नाउ देयर इजंट एनीथिंग व्हिच आई वुड से कि मैं अपना व्यू चेंज करूं। Okay. हाँ, तो ठीक है And जब तक नीचे आ viewers, रहा है। I think viewers, let me get your attention here. Bank Nifty जो spread बोला था राज सर ने, it is 44,600 went is at 110, 44,400 is at 33. Total comes down to $80, somewhere around 80. Yes, it comes to 80. So suggested at 50, 30 rupees profit is still running in Bank Nifty. Bank Nifty is near 44,500 if I'm not wrong. 44 Yes, 550। 44,550. So Bank Nifty put option, put spread, Rajbhai spot on. It is now 44,600 put is at 130, 44,400 put is at 440. Again, it's somewhere around $80 someone's making, 80 $90 ban rahe hain yahan pe. So yeah, it is one trade which was given with time where everybody could have entered was put spread of Bank Nifty. I think Bank Nifty put spread is a hit again, and हाँ भाई, everybody. निफ्टी 550 आ गया। यस, निफ्टी, यू वोंट बिलीव निफ्टी, आई थिंक निफ्टी का जो अपने जिन्होंने वो मतलब जिन्होंने उसको ले लिया रहेगा, दे वुड हैव मेड लॉट ऑफ मनी बिकॉज इट इज एट 60 राइट नाउ, सो डबल हो चुका है वो। हेलो राज भाई, आर यू देयर? हाँ भाई, डबल हो गया। Yeah. So viewers, Bank Nifty put spread has worked really well, amazingly well. We everybody would have made some 30 $40 here, definitely. And depends on the number of lots you have. And Nifty to Raj went against the trend at, and it is at 73, Raj bhai. Nifty is अभी कोई 19,600 ट्रेड put नहीं at चल 73, 44,600 put is at 135, and 44,400 put is at 45, 44. I think people will make good money in Bank Nifty put spread for sure. यार। चलिए, सही जगह ट्रेड आई। मार्केट को हमने बिल्कुल टॉप पे पकड़ा। Yes, market was एकदम perfect पकड़ा था सर आपने। I think viewers, if you're holding if Bank Nifty put spread, and if you're holding by chance if you're holding 19,600 put option, please put a thumbs up or something in the chat so that even we could know कि आपने कितना trade किया है, like anyone who has traded here or not. Viewers, are you guys there?
राज भाई अभी क्या करें, जिन लोग के पास ये है? देखिए मेरा पहला टारगेट 550 था जो कि आ गया। आपका 550 का पुट भी आप 15 का 30 हो गया, डबल हो गया। 600 का पुट भी 28 का 64, मतलब 72 से 72 मार के आया है। तो अच्छा है। अभी देखिए मैं इसको दूसरी तरीके से भी खेल सकता हूँ। मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ अभी 19500 का पुट राइट कर दीजिए, जीरो कॉस्ट हो जाएगी आपकी टेकी। अगर 500 तक आता है, 500 के आसपास एक्सपायरी होती है, तो यू विल मेक द मैक्सिमम। So that is also something which you can do, but that's what else ओके I can say right now. ओके, पीपल हैव दिनेश बुक सर, आप होते तो क्या करते सर अभी इस वक्त? गौरव, या मुझे लग रहा है ये 19540 जब तक है ना अभी, तो यहाँ हाँ फिर से पॉज कर जाएगा। बिकॉज जिस तरीके का आज का डे था, 40-50 पॉइंट मूव स्टॉप, 40-50 पॉइंट मूव स्टॉप। सो ये 540, 15-20 मिनट्स बेसिस अगर यहाँ रुक जाता है तो फिर पॉज हो जाएगा। हाँ, अगर 540 नहीं संभलता है अभी नेक्स्ट 15-20 मिनट्स से टिल 2 o'clock, तब या फिर तो 500 को भी एक बार टेस्ट कर देगा नीचे जाके okay, एकदम so और anybody who is still holding 19600 put can hold it. And Rajbhai, you had said 19500 550 का पुट ले सकते हो 17 रुपए पे, खोने को कुछ नहीं है. It has again doubled, it is at 34. Even they can hold it given the scenario. I'll still focus on bank nifty because I think bank nifty में given time and everything, so bank nifty एक बार देख सकते हैं हम लोग, and then we'll come to nifty. बैंक निफ्टी में गौरव, आई थिंक माई स्क्रीन इज, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन राइट। Yeah, सो बैंक निफ्टी में माई टारगेट वाज कि इट शुड टेस्ट इट्स लोस। तो एक बार के लिए तो इसने बिल्कुल 44,500 के आसपास आ गया है। ये 44,516 चल रहा है अभी। right. हाँ, अब Now यही एक लेवल है जो होल्ड कर सकता है तो करे, अदरवाइज इट कुड बी द अनदर डे जस्ट लाइक लास्ट वीक वेयर वी हैव सीन क्योंकि राज भाई कंटिन्यू। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, क्योंकि पुट स्प्रेड भी डबल होने आ रहा है, बिकॉज पुट स्प्रेड 50 की कॉस्टिंग थी, वो अभी 90 के आसपास चल रही है, 90-95 के आसपास चल रही है, तो पुट स्प्रेड में भी पुट स्प्रेड वैल्यू इज ऑल्सो गॉन डबल. See, input spread you can't do much. या मतलब once you have formed a put spread, you just need to avoid it because uh, either you have to book profit, you cannot do anything else कि आप राइट उसमें कुछ कर सकें। आप अगर नेकेड ऑप्शन हमने जैसे लिया था 19600 का या 19550 का, उसके अगेंस्ट हम लोग कुछ कर सकते हैं, बट व्हेन यू ऑलरेडी मेड अ पुट स्प्रेड, सो देयर इज जस्ट वन ऑप्शन कि आप आपको प्रॉफिट बुक कर लें। So राइट if the money is double, then I believe कि the first target of anything is double, at least in options. उससे ज्यादा तो राइट कोई सोचता भी नहीं है। राइट. तो हो गया परफेक्ट, हो गया. मतलब कितना इजीली बोल दिया आपने, हो गया. सर। ओके ये राज भाई, पूरा लॉट ऑफ अपलेग पीपल हमसे हैव मिस हुआ, ट्रेडेड. देखिए लॉट पूरा ऑफ पीपल अपलेग हैव हमसे मिस हुआ था। क्या सॉरी क्या. गौरव, ये पूरा अपलेग जो है 19550 से मतलब आई वुड से इन स्पॉट में अगर आप देखोगे तो निफ्टी में ऐसा तो नहीं है कि मूव नहीं आया था। हाँ, हमारा जो है, मैं टाइमिंग बोलूंगा राइट हो गया. 530 से 600 तक का लोग कह सकते हैं कि मिस हुआ, मैं नेगेटिव बैठा रहा। हाँ और अगर मैं यहाँ पे कॉल देता तो शायद उनका पैसा बनता। तो ठीक है, आई जस्ट ट्राई टू कंपनसेट दैट एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वेंट राइट। Yes, and I think Nifty is now breaking. I think we have a 15-minute candle close below 540, Dinesh sir. नहीं, लेट्स गिव इट No. अनदर 10 minutes, गौरव। Okay. नॉट Another वेरी 10 कंफर्ट। minutes. Okay. या But या until then, I'll just have a look at the premiums. I think 19600 is 71, 550 is at 33, and Bank Nifty premiums are at. Okay, Bank Nifty premium right now 100 rupees approximately पकड़ सकते हैं हम लोग. In 90 to 100 is where the put spread is trading. Let us see where it goes. Okay, so I think any other trade, sir, that comes to your mind? Gaurav, I think Rajbhai will be able to see the data and say, वही Yeah, है, Bank Nifty is the bigger, culprit. yeah, direction के लिए Bank Nifty is looking better. If this slide continues, if जो हम लोग 19600 से देख रहे हैं 44650 से, it's going to be Bank Nifty. Okay. निफ्टी में
यील्ड रिटर्न रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इधर में जम नहीं रहा है जितना ओके, बैंक। क्या बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट डेज लो पे आ ही गया, मतलब आई थिंक देयर इज नो So you स्टॉपिंग want to, दिस. if you want to be bearish, you want to be bearish with that more ओके, than. तो राज भाई, आपकी तरफ से एनीथिंग एल्स दैट वी कैन फोकस ऑन बैंक निफ्टी, इन बैंक निफ्टी, एनी फोकस ट्रेड फ्रॉम योर एंड? ना. ओके. देखो करो. Straight question, straight answer. Hey, just like at least one trade is still running. That is 19 44,600 and 44,400, and that, I can tell you one thing, Gaurav, कि yeah, पिछला एक्सपायरी 19400 पे हुआ था. We are still at 540. Okay. I believe that Nifty may settle below 500. बैंक निफ्टी एक बार 44,500 के नीचे जाने लगेगा ना, हाँ, तो फिर ये वैसा दिन होगा कि जिसमें आप आई वुड से कि आप 44,200 और 300 लेवल्स भी देख सकते हैं. बट अगेन फॉर दैट टू हैपन इट शुड स्पेंड टाइम हियर, इट शुड स्पेंड एटलीस्ट 1 आवर हियर. क्योंकि क्या होता है कि अगर जो आपने 10 बजे वाला जो मूव देखा ना, हाँ, उसके बाद से पूरे दिन कंसोलिडेट किया और अब जाके दोबारा उन्हीं लोग के पास फंसा हुआ है. तो इट शुड रीच दीज लेवल्स, इट शुड स्टे अराउंड दीज लेवल्स फॉर सम टाइम. सो अब मुझे लगता है 500-600 के बीच में इसको थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट करना चाहिए बैंक निफ्टी को. और फिर आपके 2 बजे के बाद या 2:15 के बाद वी हाँ. माइट सी फ्रेश लेग, वेदर इट विल बी अपवर्ड लेग और डाउनवर्ड लेग. वी विल डिस्कस दैट टाइम. ओके. ओके, राइट नाउ आई थिंक एक तरह से एक फायदा ये हो गया कि 44,600 इन द मनी हो गया, तो उसका थीटा उस पे इतना अटैक नहीं होगा. Since it has become in the money and it has gone deep in, not deep, but at least it has gone 100 point in the money almost. अगर यहाँ पे भी निफ्टी सेटल होता है और 44,400 के पूरा खाने मिलता है, आई थिंक एवरीबडी विल मेक सम और द अदर मनी, राइट. राइट. वो 90 हो जाएगा तो 20 रुपीज वहां मिलेंगे एंड 44 उसका मिल जाएगा. 60 टू 65 पॉइंट इजीली मिल सकते हैं ऑन अ ट्रेड विच वाज एट 50 पॉइंट, 50 रुपी कॉस्टिंग. Brilliant one. Think I'll just take the questions. Uh, Bank Nifty put any call. Gaurav, there was a put spread call given. I think there is no fresh call right now. Raj and Dinesh sir are saying it. We'll see after 2 p.m. So for now, it is like we were waiting. We got one trade. We made some money. Now most people have booked profit. Now we can just wait for another leg fetch. Where does the market go? So we'll just wait. That way, आपको you want Gaurav, viewers. What we're trying to do is our experts have not yet had lunch. So is it the stream is on. We'll just have our lunch and come back. I think we'll take a break of 15-20 minutes so that everybody comes back fresh for the 2 p.m. session. So is it okay? We are here. The chat would be there. I am here live. Let us our experts have some break. Until then, there is a doubt on flash trade. Sumit, you're there. Can you just help out with the flash trade thing? Like, you can just explain the flash trade part to our viewers. Yes, Gaurav. Yes, I'm there. Yeah. Yeah. So, So, any I just questions on tell the flash? viewers Yes, that I'll be we'll be able to back help. at Yeah. 2 o'clock. Hmm. Until then, Sumit would be explaining the flash trade and other trading tools that we have at our disposal at ICICI Direct. So, viewers, see you at 2 o'clock with Raj Deepak and Dinesh Nagpal. Until then, Sumit, over to you, Sumit. You can take the session ahead till 2 p.m. Yeah, sure. Thanks Yeah. very much. So, yeah, let me just share my screen quickly. Right. I believe my screen is visible. Yeah, it is And visible. yeah, great. Thanks. So, I'm also going through the chat in YouTube as well just to see what could be the possible questions that people are asking. My chat. Okay. How to set favorite in flash trade? Oh, great question. First of all, go to FNO, then go to flash trade. Now, um, by default, you will be able to see most traded option. So now here you will be able to see this 19600 ka option is uh, uh,
In flash trade, do we get margin? I will cover that question as well. So 19600 पे it is there right now, right? So 19600 का call is given. Now if I simply click here, it will immediately buy it, right? But if you want to set a favorite, you have to go into the settings button. Let's say 19600 के जगह पे you want to go with 19550, 550, ठीक है? 19550 आपने select कर लिया and then save it. Now your favorite has been set. So 19550 अगर आप करोगे, अब अगर मैं यहाँ पर, because I have clicked on 19550 का call, and if I put यहाँ पे, तो it will say that no put contract in favorite because you have already set call का 19550 as a favorite, right? Please get put contract as a favorite. तो मेरे को वापस जाके क्या करना होगा, यहाँ पर जाके मुझे 19550 का put कर देना होगा. Save. अब अगर मैं put पे buy करूंगा, then it will allow me. But again this case if I click on call, तो मेरे को बोलेगा भाई आपका call is not set as favorite, so you have to set your call as a favorite in that case. So again what you'll have to do is you'll have to go over there, you'll have to click call. Okay, now I can clearly see, तो यहाँ पर अगर आप call पे click करोगे you will be able to trade immediately. Now इसमें क्या होता है कि let's say I refresh this screen completely, so it will bring me to the default one, which is most traded option. Now if you want to trade directly using the given parameters that we have given here, then you can click anything. I mean you will be allowed to click, your view is bullish, then you can click on buy. If your view is bearish, then you can click on put. So here अगर मैं click करता हूँ तो immediately at the back end side you will be able to see कि आपका put का जो chart है it has changed to the put का contract. And then अगर मैं अभी देखो यहाँ पर 19500 का put हो गया है, and then if you click on call, तो यहाँ पर back end पे you will be see that the call का price is also changed, 7.9 rupees हो गया है, right? So if anything from the default, yes you can do that, but anything if you want to change it apart from what is given as a default, so 19700 किसी को चलो call, somebody wants to sorry 650 का किसी को कुछ करना था, right? Save it. 19650 का अगर किसको करना है तो they will be able to do it, right? Now there was another question, in flash trade do we get margin? Sort of, yes. What I can tell you is just go here in intraday. Yes, you will you will get this intraday margin. So let's say for example 19600, 19600 ka price, let's go 19500 slightly in the middle, then I will be able to show you in better way. इसको मैं हटा देता हूँ intraday. So and limit. So 19500 का price is somewhere around 45 rupees, ठीक है? Now 45 रुपीज को अगर मैं 46 रुपीज को अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 5 20 रफली अराउंड 2000 रुपीज के ऊपर आपको मार्जिन लगेगा. बट एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पर इसको स्टॉप लॉस के साथ रखता हूँ, इंट्राडे में क्या हो जाता है कि यू कैन पुट अ स्टॉप लॉस डिफरेंस. तो नाउ आई कैन पुट अ 10 रुपी का स्टॉप लॉस डिफरेंस. नाउ व्हाट दिस 10 रुपीज इज 46 minus 10 करूंगा तो 36 will be my stop loss, somewhere around that number, not exactly, just giving you that, sorry. So 45 है मेरा, let's say मैं लिमिट पे 45 रखता हूँ, and accordingly I'm putting 10 rupees as a stop loss. अब ये 10 rupees का, because I put a 10 rupees का stop loss, I can buy this whole quantity at 675 rupees margin. So आपको यहाँ पर पूरा मार्जिन नहीं लग रहा है as compared to normal. नॉर्मल में इट विल यू विल इनकर फुल मार्जिन. तो 50 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 50, तो 5 5 25, रफली अराउंड 2500 रुपीज से थोड़ा ज्यादा मार्जिन आपको लग जाएगा. तो ये वाला आपको स्टॉप लॉस ऐसे ही रखना है. तो somebody is asking how do we put a stop loss in flash trade. So that's how you put a stop loss in flash trade. यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आपका कॉल है, यहाँ पर आपका सॉरी इंट्राडे है, एंड देन यू पुट, यहाँ पर आप देख लोगे ऑर्डर्स कैन नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर SLTP आउट ऑफ रेंज. नाउ दिस इज बिकॉज के 10 रुपया ये प्राइस से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है? तो अगर मैं ये 10 रुपए को, 10 रुपए के जगह पे इफ आई पुट 3 रुपीज का स्टॉप लॉस, 3 रुपीज का स्टॉप लॉस का मतलब क्या हो गया कि ये 8 रुपया जो चल रहा है,
ये 8 रुपया जो चल रहा है, 8 रुपए से 3 रुपया माइनस कर दो, which means that 5 रुपये will be your stop loss. Now suppose a person who is buying like 1000 quantities, उसके लिए 3 रुपए का stop loss will make sense at this particular number जहाँ पे 8 रुपए का प्राइस चल रहा है, and then he just wanted to lose 3 rupees and that's it. So that's how you will put. Um, and again, margin required here will be like 950. यहाँ पे it is closely very tight because 3 ही रुपए का stop loss रखा है. अगर मैं इसको 7 rupees का stop loss रखूं, ideally basically you are losing everything. अगर 1 रुपए का stop loss रखूंगा तो probably it might change. No, at the moment it's not changing because it's very tight. इसको अगर मैं 500 का कॉल कर देता हूँ, जिसका प्राइस 56 है, and I'll go for the intraday. इसका प्राइस 19500 का प्राइस should be somewhere around, sorry, how much it is, cancel my mistake, क्यों आ गया है, let me just refresh very quickly. This is 19600, let me go with 19500. I'll go with intraday, I'll go with limit which is 52 rupees. अब अगर यहाँ पर अगर देखोगे 1 रुपए का स्टॉप लॉस रखा है तो you will need only 310 rupees in order to trade this particular one. अब ये एक के जगह पे मैं 10 रुपया करता हूँ तो स्लाइटली मेरा मार्जिन भी बढ़ जाएगा, 715 रुपया हो गया. अगर इसका स्टॉप लॉस में और फार अवे करता हूँ, 20 रुपीज कर देता हूँ. 20 रुपीज का मतलब ये है 52 minus 20. 52 minus 20 means 32 rupees will be your stop loss in this case. तो थोड़ा मार्जिन बढ़ गया, 30 रुपीज का स्टॉप लॉस कर देता हूँ, अगेन थोड़ा और मार्जिन बढ़ गया 40 रुपीज. सो द फर्दर आई एम गोइंग, मेरा मार्जिन सीधा बढ़ते जा रहा है, राइट. अगर मैं 50 रुपए का स्टॉप लॉस, इफ समबडी पुट्स 50 रुपीज का स्टॉप लॉस अज्यूमिंग कि ये 50 रुपए पे कट जाएगा, नो दैट्स नॉट द वे. 50 रुपीज का स्टॉप लॉस का मतलब 52.8 minus 50 which is somewhere around 2.8 rupees. तो 2.8 rupees तक जब तक मार्केट आएगा तब जाके आपका पोजीशन कटेगा. You save it and you go with it. So that's how you put. Okay, sir, please explain scalping algo execution with one strike example. Okay, ठीक है. That's a good question again. All you need to do is just go on to FNO Smart Tools में. I believe you all would have liked this menu जहाँ पे Smart Tools आपको दिखाई देगा. Put like in that if you really like this menu kind of thing. So इधर आपको execution algos में जाना है, ठीक है. Now you have a scalping algo here. Scalping algo में क्या होता है, the very basic premise of scalping is buying low and selling high, ठीक है. The very basic. तो आपको क्या करना है यहाँ पर, you just have to click on go. Let's say I go with Nifty. आज क्या चल रहा है, 10th August चल रहा है. I don't want to trade on expiry. I would rather go with 18th. 18th ही है ना, नेक्स्ट 16th होगा, सॉरी 17th है. ओके, 17th अगस्त का एक्सपायरी है एंड आई वुड लाइक टू गो विद 19600 का कॉल, ठीक है. 81 रुपीज चल रहा है, मुझे बाय करना है. मिनिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी आप रख सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड एटलीस्ट 2 लॉट्स टू गो विद, स्टार्ट विद, देन ओनली दिस स्कैल्पिंग एल्गो विल वर्क परफेक्टली. आप यहाँ पे 1000 क्वांटिटी भी रख सकते हो, आपको जैसा रखना है आप वैसा रख सकते हो. सो लेट्स से आई एम स्टार्टिंग विद 200 quantities. Let's say मेरा slicing quantity will be 100 in this case. I want to start at 80 rupees. This is going to be my starting point. So 80, 80.45 चल रहा है. Let's start with 80. Average entry difference I want. Entry difference मतलब जैसे मार्केट नीचे नीचे आएगा it will enter. So 2 रुपये पे मैं एंटर करना चाहता हूँ. At the same time I would like to exit at 3 rupees in profit. तो कहने का मतलब यह है कि whenever market will dip from 80 to 78, it will take 100 quantities, it will buy 100 quantities, and then from 78
because that will pick up your base price, and 78 से अगर वो 81 हो जाता है, which is like 3 points up, then it will sell the 100 quantities that it has accumulated. ठीक है? Now let's start with the market one. I will just immediately start with the same. तो ₹2 मेरा average entry है and ₹3 मेरा take profit है. ठीक है? Now I will submit this. Let's say I submit. Market काफी slow है. I'm going with the 17th August because I just wanted to show you. It's kind of quite volatile on the present expiry. So let's say I'm submitting it. I'm just confirming it. My order has been placed. ठीक है? I will go to the awaiting. Whether I see awaiting? No. Running में yes. Running में आ गया है. तो यहाँ पर मेरा net P&L has also started. 55 100 रुपीस का लॉस हो रहा है. प्लेस 100 क्वांटिटीज, नेट ओपन क्वांटिटी भी 100 बाकी है. यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ एन एग्जिट कर सकते हो, एंड देन यू कैन गो टू द एल्गो लॉग, एंड एल्गो लॉग में यू विल बी एबल टू सी कि एट व्हाट टाइम इट हैज स्टार्टेड, एंड ट्रिगर प्राइस मेरा 82.85 का था, ट्रेडेड प्राइस 83.33 का था, एंड the average buying price is 83.33 here, and current LTP is 83. तो अब because it has gone 83.33, मेरा जो लॉजिक था, लॉजिक में मैंने क्या डाला था, ₹2 एवरेज एंट्री डिफरेंस डाला था एंड ₹3 एग्जिट डाला था. अब ₹2 एंट्री डिफरेंस था, तो इसका मतलब मेरा 83 से, देखो मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, सो इट हैज टेकन अ पोजीशन नाउ. अगर मैं करता हूँ तो ₹1000 का भी मेरे को इमीडिएटली फटाक से वो नीचे आ गया है. सो इट हैज बॉट 200 क्वांटिटीज नाउ. ठीक है? अब जहां पे लास्ट उसने कितने पे बाय किया है, 80 रुपीज पे बाय किया है. अब मुझे प्रॉफिट बुक करना है, तो 80 से जब तक 83 नहीं होगा, तब तक मेरा पोजीशन जो 200 क्वांटिटीज एक्यूमुलेट हुआ है वो स्क्वायर ऑफ नहीं होगा. सो लेट्स वेट टिल इट बिकम्स 83. आई होप इट बिकम्स 83. I believe all of you saw 1000 rupees का लॉस था वहां पर immediately because the market dropped very significantly. तो 79 पे अभी है, 83 पे जैसे ही आएगा, roughly around 83 83.05 to be honest, तो मेरा जो 100 क्वांटिटीज है इट विल बुक अ प्रॉफिट. अभी यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा एवरेज प्राइस हो गया है 81.68 का. ठीक है? सो आई एम वेरी क्लोज टू माय एवरेज प्राइस राइट नाउ. सो लेट्स जस्ट वेट एंड सी व्हाट हैपेंस. So I believe as far as logic is concerned, I believe everybody understands कि ₹2 का अगर मैंने एंट्री रखा है, तो मार्केट जब whatever price that you have entered first, so this was my entry for the first one, उधर से ₹2 नीचे आएगा, तो it will buy 100 quantities, another slice of 100 quantities, because my maximum quantity I have kept as 200, तो वो उसके beyond नहीं जाएगा. So 200 से ज्यादा वो नहीं करेगा. अभी आप देखोगे कि 81 से जो लास्ट जो बाई हुआ था 78, सॉरी 80, सो 80 से नीचे 78 आता है. 78 के अराउंड it would have bought another 200 quantities, but because I have put the maximum quantity here, वो नहीं बाय करेगा because the quantity has been exhausted. ठीक है? और मेरा स्लाइसिंग क्वांटिटी 100 है यहाँ पे, तो 100 क्वांटिटी में इट विल कीप बाइंग. अगर मैंने यहाँ पर 400 500 रखा होता, तो अभी तक उसने और 100 कर करके उसने एक्यूमुलेट कर लिया होता, बिकॉज अभी तक वो नीचे की तरफ ही चल रहा है. अभी तक मेरा एक भी जो लास्ट पॉइंट है, दिस इज माय लास्ट पॉइंट, बेसिकली दिस इज माय लास्ट. 80 + 3 होना चाहिए, तो 83 पे इट विल एग्जीक्यूट 100 क्वांटिटीज. इट विल स्क्वायर ऑफ 100 क्वांटिटीज. एक बार वो 83 पे स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, तो 83 से फिर उसको किधर जाना होगा, इट हैज टू गो ऑल द वे टू 86 टू स्क्वायर ऑफ द अनदर 100 क्वांटिटीज. बट अगर वो 83 से फिर से 81 आता है, देन इट विल अगेन एक्यूमुलेट 100 क्वांटिटीज इन दैट सेंस, राइट? So I believe why don't you allow one to set two favorites on one put and one call? Sir, the scalping may it is designed in such a way that we wanted the rookie traders to understand one contract first and then get the feel of what it does. And especially the scalpers, they keep on trading the same contract in and out करते रहते हैं. So that was the concept behind it. um, so that was it. Can you explain me the cost of flash trade? I know it's 7 rupees but always been charged 40 rupees. Sir, 40 rupees charge इसलिए हो रहा है क्योंकि as per the terms and condition, initially when you trade, it will charge you the entire the brokerage,
which is 20 rupees on the buying side and 20 rupees on the selling side, but you will get refund within 7 working days. Now the process has been completely automated. Earlier it was manual, so now the process has been completely automated. So automate ho gaya hai, so you won't be charged 40 rupees now. You will be charged 7 rupees on the buying side and 7 rupees on the selling side from now on. So the process has been automated, तो वो refund वाला भी issue नहीं बचेगा. Flash trade is advertised for 7 rupees per hour, but don't think, sir, it is flash 7 rupees. As I mentioned, as per terms and condition, earlier the process was manual, so we used to charge the full brokerage, and then within 7 working days, the brokerage used to get refund. But now the process has been automated, so you will be charged only 7 rupees in that case. Um, I was told will be charged 20, but the registered plaster you will be refunded 20 minus 13.7, but never happened. Sir, you need to go and see in your my message. You will be able to see it. कि आपको refund आया होगा sir. But you'll have to wait for 7 working days, and 7 working days में you will get refund. Scalping में if the market keeps going down and down and down 50 points, then go sideways. तो सर इसमें like in my condition what I've done is I've given a cap to the maximum open quantity. तो एक बार maximum open quantity reach हो गया, and now the market is continuously going down and down and down, so you can clearly see that I'm losing money, right? You can clearly see that I'm losing money right now. तो ये जो चीज है ये like any other strategy or anything, if it doesn't go according to your plan, then you will lose money. तो इसमें there is a possibility कि अगर आपने maximum open quantity अगर आपकी ज़्यादा heavy है, let's say for example 2000 की open quantity, so what it would do is scalping में it would have bought at 83, 80, 78, 76, then 74, then 72. तो जब वो 72 से वापस 74 आएगा तो it will square off the 200 quantities. Then again 74 से 76 आएगा, it will square off another 100 quantities. Then 74 से again 72 आएगा तो it will buy another 100 quantities. तो ये पूरा दिन भर ऐसे ही चलते रहेगा. Now in my case it is happening that कि ये now you would have seen that वो 73 आया था, बट अगर मेरे केस में अगर मेरे पास एडिशनल क्वांटिटीज होती तो 73 पे भी वो बाय करता था, एंड देन 75 पे आने के बाद 75 76 पे आने के बाद इट वुड हैव स्क्वायर्ड ऑफ द पोजीशन. So in scalping this, can we play stop loss? No, you can't. Can't you square off 100 pieces at 82? um, what do you mean by that? I mean, if you want to square off 100 points at 82, yes, you can. What you'll have to do is you'll have to go to the open position page, and from there you will be able to square off. Now, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे 73, 72 का प्राइस मैंने देखा था, वहां से again it has come back to 78. तो अगर मैंने यहाँ पर क्वांटिटी अच्छी खासी रखी होती तो it would have kept accumulating, and then the market shows a slight recovery, you would cover your the losses that you have recurred, and you will be able to make profit, in fact, because there is the square off mechanism only that too on the profit side, so you will be making profit only in this case. Sir, I joined late. Is this an execution algo? No, sir. This is not an execution algo. This is just that Raj sir and the other guys have actually taken 15 minutes break for the lunch. So they will be coming back. In the meantime, I'm just showing the scalping because there was some questions raised in the forum. So I'm just showing flash trade and scalping in the meantime. Um, is it a special price for flash trade? 7 rupees, sir. Exit made in 19550, put at 50 points again. Okay, can't apply stop loss. Yes, you can't apply stop loss in execution algo. In mobile, yes, execution algo is available in markets app mobile. What is the brokerage for flash trade other than expiry date? Sir, for flash trade, it is 7 rupees per order, and also not only for flash trade, also for execution algo, it is again 7 rupees per order. So, मेरे order में मैंने क्या किया था 100 rupees every single time, right? Is my slices. So, every single time when the system buys or sells 100 quantities, you will incur a brokerage of 7 rupees on the buy side and 7 rupees on the sell side, plus STT, GST, and so on and so forth. STT and so on details.
flash trade chart don't show properly, it just gets hung. I would request you, before you start trading, I mean, just a request, please try to clear your cache files and try to re-log in, and I believe it should run smoothly, just in case if it doesn't work. And if it still doesn't work, then please write to help desk in that case. Brokerage for flash trade, then expiry date. So there is no other, no separate prices for expiry date and the other date. Any date, any time when you trade from flash, it will be 7 rupees. You are saying that you are being charged 10 rupees per option. Please write to help desk, detailing your plan and everything, and they will be able to help you out in that case. In flash trade, you cannot set buy or sell price. Um, for the first one, you can start with the limit price, but thereafter you will have to keep adding and exiting, which will happen at a market price. Want to learn algo on ICICI Direct? Sir, we conduct plenty of webinars. Every Thursday, I believe, sorry, every Thursday in the evening, there is an Breeze API ka webinar. Then there are online algo webinars as well. If you want to learn execution algos, not only this particular one, there are other algos as well. Order slicing, price band, and averaging. You will be able to use these kind of algos as well. There are videos available on ICICI Direct channel. You can help that with that. So just because the forum is already there, TWAP order slicing may, I'll just give you the brief of what a TWAP order slicing is. Suppose you wanted to buy a Bank Nifty 10,000 quantities. Okay. So here, if I go here, let's say I type Bank Nifty um, 44,500 का call I wanted to buy. Let's say 2,000 quantities मेरे को buy करना है. But this is a huge quantity, right? I wanted to buy after every 2 minutes. तो मैं क्या करूँगा, मेरा slicing quantity मैं यहाँ पर 200 रख देता हूँ. So every single time order goes through, order will go at market and at 200 ka slices. Till what time? Till your total quantity gets exhausted. So that's how this order slicing works. So order slicing, what it does is it will um, um, breaks down your entire 2,000 quantities into several different slices as you requested. यहाँ पर आप अपना स्टार्ट टाइम एंड टाइम डाल सकते हो. यहाँ पर आपका टाइम इंटरवल है. टाइम इंटरवल का मतलब फॉर आफ्टर एवरी 2 minutes it will send out the order. ठीक है. Back. Now the second one is price band. Price band is on top of order slicing. Order slicing में हम लोग ने क्या किया था कि 2,000 क्वांटिटी को we sliced into 200 quantities for every 2 minutes. Now the same applies here as well, but this you can apply between a price band. Now let's say the same example. Bank Nifty 44,500 का एग्जांपल ले लेते हैं. प्राइस 70 रुपए चल रहा है, मार्केट ऊपर भाग रहा है. यस. बाय अगेन 2,000 क्वांटिटीज ही मेरे को बाय करना है. स्लाइसिंग क्वांटिटी मेरा 200 ही है. टाइम इंटरवल विल बी अगेन 2 minutes. लेट्स से आपको 2 minutes नहीं, आपको एक मिनट में बाय करना है. अब आप यहाँ पर आपका प्राइस रेंज डाल दोगे. अब यहाँ पे 63 का प्राइस चल रहा है. आई वांट टू बाय ओनली बिटवीन 65 and 60. Don't want to go with 60, let's say 63. तो आपका जो lowest price है which is 63 and the highest price is 65. तो जब तक प्राइस ये दोनों के बीच में नहीं आता है तब तक ये 200 का स्लाइस it won't shoot. Whenever your price reaches between these two number, एक मिनट में it will keep shooting this 200 का slices. Now if you want to keep this as let's say 50 and 70 rupees के बीच में जब तक रहेगा तब तक आप मेरा 200 का slices करते रहो. You can even do that. ठीक है. So going back to price band. So order slicing was 2,000 को हम लोग ने multiple slices में किया. Price band में the same 2,000 को multiple slices में किया but with a price range. जैसे मैंने बताया आपको 60 रुपए से लेके 65 रुपए के बीच में प्राइस आएगा, then it will shoot. Averaging में it is like
it will accumulate and it will distribute in price steps. तो इसमें क्या होगा, मार्केट थोड़ा ऊपर गया है, सो लेट्स गो एंड सी व्हाट इज हैपनिंग विद अवर स्कैल्पिंग क्विकली. मार्केट नीचे आ गया, मार्केट नीचे आ गया, सॉरी. तो द प्राइस दैट आई सॉ निफ्टी इज एट डेज लो ऑलमोस्ट नाउ. चला गया था. सो नीचे आ गया क्या, लग रहा होगा 1500. ओके ठीक है, तो उधर ही है, नथिंग हैपेंड. सो 74 75 की उधर ही है, ठीक है. So just Gaurav, just allow me just Yeah, no another problem, no couple problem. of minutes. Yeah. I'll just finish this averaging one. So what averaging says is accumulate करना है and then you have to distribute. So everybody knows कि मेरे को 100 रुपया आया, 100 रुपए के बाद it comes down to 98, आप और बाय करोगे. उसके बाद 98 से 95 आएगा, then you will buy again. So it is exactly the same. तो लेट्स से अगेन मैं निफ्टी का एग्जांपल ले लेता हूँ. निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी जाते हैं. बैंक निफ्टी 44500 ही ले लेते हैं. बिफोर 500 पे कॉल ही ले लेते हैं. 48 अभी नीचे आ गया, वो 74 73 तक गया था. सो बाय अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी लेट्स से 100 1000 डाल देता हूँ. एवरेजिंग क्वांटिटी मेरा 100 का होगा. So what I can put is I can start at averaging start price, जो भी आपको जहाँ पे start करना है, you can start at, or you can start at the current market price, whatever it is. आपको start time डालना है, end time डालना है, and average entry difference डालना है. Now this becomes the average entry important number. So if I put 2 rupees here, तो 2 rupees का मतलब क्या है? Let's say you started at 53 rupees. तो 53 से जब वो 51 आएगा, because I'm buying, 53 से 51 आएगा, it will buy. Now it won't simply buy at 51. You have to put a direction here, right? मैं down करूंगा तो वो 51 पे buy करेगा. अगर मैं up करूंगा तो it will buy at 53 plus 2, which is 55. तो जैसे 55 आएगा, it will keep buying. So on the upper side, if you put up 55, then 57, then 59, then 61, it will keep buying this 100 quantities. अगर आप down रखोगे तो यहाँ पे अगर 53 है, ठीक है, 53 के बाद it will be 51, then 49, then 47, then 45, and so on and so forth, right? So that's how this averaging works. Same goes with the sell. Sell आपको करना है on the upper side. So 53, 55, 57. So it will keep selling. Whatever you have accumulated, या फिर you are going with the short sell or whatever, it's up to you. डाउन में होगा तो 53 पे आया, 53 पे सेल किया, फिर 51 पे सेल किया, देन 49 पे सेल किया, 47 पे सेल किया, and so on and so forth. So it will keep doing that. So in this case you don't have to keep chasing the numbers, as you already know कि यहाँ पे price point very quickly fluctuate, मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे होता. Now while Gaurav was saying the price was somewhere around 43 or something, you can see that 56 57 पे आ चुका है already. So 15 पॉइंट्स मूव का स्ट्रेट अवे मूवमेंट उसने दे दिया. सो जब तक आप कुछ टाइप करोगे, कुछ करने जाओगे, दिस एग्जीक्यूशन विल गो वर्क्स बेस्ट इन दैट केस. ठीक है. सो जस्ट लास्ट थिंग, जस्ट वांटेड टू शो अगर इधर कुछ हुआ है. सो लेट्स जस्ट गो एंड सी अगर कुछ ट्रेड हुआ है. तो नहीं हुआ है, 76 पे आके अटका हुआ है. ठीक है. सो गौरव, यू देयर? Yes, I'm there. मैं बस मार्केट देख रहा हूँ, मैं बस वेट कर रहा हूँ राज भाई और दिनेश सर का. अच्छा, ओके. So in the meantime, let me see. F&O option. They are there. Everyone's there. Okay, They great. are back. Okay. I think राज भाई का इंतजार तो ऐसे होता है, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, तो आज लगता है व्यूअर्स तो उस हिसाब से भी राज भाई का इंतजार कर रहे हैं. Okay. So Raj bhai, I'll just give a recap that your put spread on Bank Nifty is doing really well. You had a 44,600 put buy, 44,400 put sell. Total costing 50 rupees. Right now, total costing is at 100 rupees. So that has doubled.
Nifty, many would have bought, many would have not bought. So I'm not taking in that into consideration. But I'm seeing a fresh call or something on 19 any fresh call on 19,500 put option, Rajbhai, because I remember जाने से पहले आपने कहा था कि if we I think Dinesh sir was saying कि if we close below 19,540 then it doesn't look good for Nifty, right? See, Yeah, right now market trying. हाँ दिनेश सर आपकी कॉल थी सर. या बिलो 540 जितना सस्टेन करेगा उतना प्रेशर बढ़ता रहेगा. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वाज बैंक निफ्टी. वो बिलो 500, इट्स अ वेरी बैड सीन उसका, जो जैसा स्ट्रक्चर बनाए जा रहा है वो एकदम इस समय बहुत खराब. Right, but it doesn't look good. I think if given this scenario, 19,500 put had 2 crore or almost more than 2 crore OI. I think ये जैसे नीचे sustain करे जा रहा है, I think it doesn't look good to those put writers are at risk right now. To be honest, there's no covering scene, massive covering scene there, but they are at risk. Rajbhai, any new anything on your radar right now? What do you see about Nifty? Can we have any check on Nifty मेरे and ख्याल Bank से Nifty both? पहले तो अभी बियर स्प्रेड जो हमने बनाया है तो उसे क्लोज कर देना चाहिए. Okay, Bank Nifty में. हाँ. Okay, so once who have bear spread in Bank Nifty can close it. Net gain 50 points. Approx 50 points is the gain here. Or well, it is a double gain, like double हाँ, your. मोर देन दैट नाउ. बट ठीक है जिसका जैसा भी हो. Okay. मेरे ख्याल से ये निफ्टी दोबारा से 560 की तरफ जा रहा है. Okay. 508 के आसपास. So then we will attempt another shot that point of time. But क्या है कि अगेन मतलब इट्स नॉट फॉर मी, इट्स नॉट अ बाई कॉल ऑप्शंस, बाई कॉल मार्केट. Yeah. समवन कैन कि हाँ जैसे ये ऊपर से नीचे आया है, नीचे से ऊपर भी जा सकता है. बट ओवरऑल जो वीकनेस है स्टॉक्स में, यहाँ से मैंने चालू किया था कि आप अगर मिड कैप और स्मॉल कैप का मार्केट देखेंगे ना तो दैट इज स्टिल अंडर प्रेशर. मतलब मिड कैप तो आपका अच्छा खासा गिर गया था इस बीच में, नया लो मारा है. और स्मॉल कैप में भी नया लो मारा है. अगर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ, एक सेकेंड. सी देख सकते हैं गौरव आप. Yes, Rajbhai. दिख रहा है. हाँ, सो सी इवन स्मॉल कैप इंडेक्स हैज मूव बिलो yesterday's low. This is your small cap index. So pressure is in the broader market after a long time. And similarly for the mid cap index, it's still not below yesterday's low, but it has also fallen sharply. So I believe that there could be some more recovery, but net bias remains negative, and we are approaching 550. So 19,550 put is now currently, it's come back to 21. Yeah. हाँ, तो एक बार दोबारा से मुझे 15 रुपए के आसपास का मिलता है तो मैं दोबारा कोशिश करूंगा लेने के लिए. ओके, तो 22 पे चल रहा है, तो आप बोल रहे हो कि ये अगर ये 15 के आसपास आता है तो राजभाई इंस्टेड ऑफ 15 एनी रेंज 15 to 18, एनीवेयर बिटवीन 15 to 18 वुड आल्सो डू, और स्ट्रिक्टली 50 15? समझा नहीं. मैं बोल रहा हूँ 15 पे ही बाय करना है और एनी रेंज ऑफ बिटवीन 15 to 18 रुपीस. हाँ हाँ, 15 to 18 रुपीज दैट वी कैन लुक एट. बट इफ यू रिमेम्बर गौरव, जो आपको ट्रेड थी जो सबसे पहले था कि हम लोग को 550 का शॉर्ट स्ट्रगल कर सकते हैं, so that has come down to 40 rupees, 42 rupees Yes. to be precise. Yes. Dinesh sir was explaining the logic, and I think 62, 63 when he spoke about it, and it has 42. So 19,550 straddle also has given 20 points if somebody would have listened to this. And Rajbhai, बात करते करते Nifty 550 put has spiked up to 26. It went to 18, and from there it has gone to 26 right now again. 27. It is moving up, moving quick and fast now. Any any suggestion on 19,500 put option if somebody have missed this? See, वो still तो I हीरो would जीरो हो जाएगा क्योंकि वो 8 रुपए पे, वो तो कंप्लीट हीरो जीरो हो जाएगा. वो हीरो जीरो सॉर्ट ऑफ कॉल हो जाएगी, फिर उसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं रहेगा. राइट.
बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा भी यहाँ पर मार्केट अगले 10-15 मिनट, तो आप योर प्रीमियम विल रेशनलाइज अ बिट। ओके, तो 19550 इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू सजेस्ट एट 15 रुपीज। उसके आसपास आएगा तो ही लेना है, और एल्स भूल जाओ, वी विल नॉट टेक एनी ट्रेड। अब मेरे ख्याल से वो मतलब आपको अगले 2-3 टिक में आपको 15 to 18 रुपीज में मिल जाना चाहिए। राइट, और उसका हम लोग करीब 10 रुपए के आसपास या 8 रुपए के आसपास के स्टॉप लॉस लगा के देख सकते हैं उसे। ओके, ठीक है राज भाई, सम क्वेश्चंस आर देयर, आई जस्ट आई Vipin, 19500 is not suggested. Why are you buying 19500? Please don't buy strikes or trades that are not suggested by Raj. Be a problem for you. Now you lose money. I may also go wrong. Yeah, you may also go wrong. Exactly. And So, and again, see, it's again Reliance. Now another making new high. So that is taking care of the market, and your 550 put has come in our range. 550 has come in our buy range. Okay. Yes, Reliance is at 2550. मतलब Reliance is now back. सबको बोलते हैं ना, एकदम पकड़ लिया है ऐसे. Okay. So Raj bhai, I think wait just 19550, but still is at 2120. It is not coming to 50. मतलब it is not. So It, अभी it, जैसे आपने कहा था it कि has बैंक. come. या It has come down. अभी दोबारा से आया, तो if somebody has placed the order at exact price of 18, तो I thought he would have got that. पर ठीक है, अभी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो द राज लो भाई. इज 1750 के आसपास का इसने लो मारा है इसी टिक में, इफ यू कैन सी। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर निफ्टी में वी हैव आईटी एंड बैंक, वी आईटी एंड रिलायंस टाइमिंग टेकिंग. टाइमिंग या कैन वी कीप आवर फोकस ऑन बैंक निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी. हाँ, बैंक निफ्टी में ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए मैंने उस वक्त के लिए बेयर स्प्रेड हटवा के मैं इसको सोच रहा था कि दोबारा से ये 550 के आसपास अगर मिलता है ना, तो हाँ. मैं इसको दोबारा से देख सकते हैं हम लोग। और आई हम्म. थिंक वो आया है, और हम लोग निफ्टी की में बात करते रह गए हैं। तो और एक बार मुझे ये जो 54,500 वाले फुट है ना, इनमें हम्म. क्लोजर मिलेगा तो एक छोटा सा कॉन्फिडेंस एक क्वेश्चन आएगा। एज ऑफ नाउ वी हैवंट सीन दैट क्लोजर। है One second, Ethereum. one second. हाई Dinesh sir, can you go on mute? क्या राज भाई? तो 44,500 का जो पुट बेस है, दैट हैज बीन क्वाइट गुड, मतलब वी हैवंट सीन मच क्लोजर ओवर देयर आल्सो। यहाँ पर थोड़ा सा चाहिए कि यहाँ पर थोड़े से ये ऑप्शन राइटर्स इनको डर लगे, ये लोग थोड़े जाएं यहाँ से, तब हम लोग जो है दैट वुड बी आवर फर्स्ट इंडिकेशन कि हाँ हमारा सेकेंड हाफ में, मतलब अब लास्ट 1 आवर ऑफ द ट्रेड आता है, उसमें हम लोग दोबारा से नीचे गिरे। बट Okay. ओवरऑल माय रिकॉर्ड इन फ्रॉम 230 to 330 hasn't been so great. So as of now, at 550, I would look at buying 44,500 put. बस थोड़ा सा वेट में जरूर करना चाहूंगा कि मुझे 15 मिनट में भी अगर मुझे यहाँ पे क्लोजर देखने को मिलता है ना हम्म. इस पुट में, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए अच्छा रहेगा। ओके, ओके, मेक सेंस. ये बात करते करते देखा जाए तो थोड़ा सा ऊपर, लाइक बैंक निफ्टी भी 44550 आ गया. हाँ, और वो 19,550 का पुट पूरा का पूरा 15 रुपए का। एग्जैक्टली. आज भाई उल्टा सिनेरियो, अगर आप बुलिश साइड पे खेलेंगे कि आज अभी भी लाइक कि मैं बुलिश तो होने नहीं वाला, सी तो बाय करूंगा ही नहीं, आई लुक टू नहीं सेल नहीं, ऑन हाई. आज आज ऐसा नहीं है, जैसा मैं पिछले 3 बार से कह रहा था, आज ऐसा नहीं है। ओके. आई कैन लुक इनटू इट, बट फॉर दैट आई मतलब देखिए, बेस्ट केस में निफ्टी का सेटलमेंट कुड बी समवेयर क्लोज टू 19,600, दैट या कुड बी द बेस्ट केस प्रोबेबिलिटी फॉर मी। सो इन दैट सिनेरियो योर 550 कॉल कैन बी डबल ट्रिपल। ओके, बट उसके लिए मेरे पास अभी ट्रिगर नहीं है। फॉर बैंक निफ्टी अगर हम लोग दोबारा से 44,600 और 630 के ऊपर जा रहे हैं, तो परहैप्स वी माइट सी अ कवरिंग ओवर देयर। तो या जैसे बैंक निफ्टी
बात करते करते बैंक निफ्टी इज ऑलमोस्ट 50 44 600. यस, तो ये जो लेवल है समवेयर क्लोज टू आई वुड से 630। या अगर दोबारा से हम इसके ऊपर ट्रेड करने लगते हैं तो ये जो बेरिश नेचर की हम लोग बात कर रहे थे बैंक निफ्टी में, वो समहाउ थोड़ा सा अ, और ये आ रही है बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा। राइट. लेट मी गो थ्रू ऑल द स्टॉक्स। बाकी तो कहीं नहीं है इस तरीके का कोई भी बहुत बड़ा मूव, बट इट इट वाज ओनली इन एचडीएफसी बैंक। बट अगेन आई विल लुक इनटू इट ओनली अबव 630 लेवल बैंक निफ्टी, अदरवाइज नॉट रिकमेंडिंग Again, बाइंग। that level, let's say अपने Nifty when Nifty were near 19600, you are suggested कि buy a put near this level because makes sense because risk to reward is in your favor. I think 630 if Nifty doesn't cross 630, I think वही आप favor में put buy करने के favor में रहोगे. Okay. So it has come down, Rajbhai. It has come down to 555 again. मतलब it could not sustain that level. Bank Nifty is not able to sustain 44 600. It's very clear. Yes. And Even so राज भाई, अगर अगर कोई स्ट्राइक आपके नजर में हो ये टाइम पे 19550, is what you had said about near 15 rupees in Nifty. In Bank Nifty, if I have to suggest any strike right now, any strike that is on your radar that comes to your radar? अब देखिए, नाउ वी हैव जस्ट 1 आवर लेफ्ट, सो Yeah. दैट हैज टू बी एटीएम स्ट्राइक। So it has to तो be ATM strike. So you 44 600 only. It is 67 right now. I think timely exit आपने कह दिया था वहां पे. और अगर मुझे इस वक्त देखना होगा कि मैं क्या बाई करूं, तो दैट हैज टू बी 44,500 बिकॉज दैट कुड बी अ बिग हीरो जीरो Yeah. स्ट्राइक फॉर द डे। Okay. So basically, viewers, he's saying, yeah, Raj. बैंक निफ्टी की जो ऑप्शन प्राइसिंग है दैट इज स्टिल इन फेवर ऑफ puts. So I'm not pretty sure. Let it surpass 630, then only I will change my bias. Otherwise, I will not. Okay. So for now, we'll just wait. There is No, no. I will buy 44,500 put. अभी 25 रुपए का मिल रहा है तो I don't mind. Okay. So you're like, 44 500 put can be bought at 25 rupees, which is 25 28 rupees. Okay. So viewers, who want to play zero hero on Bank Nifty, Raj Deepak is suggesting to buy 44,500 put at current price, which is trading near 25.30. It went to 33, so you can buy it somewhere in that range. So 44 500 is the zero hero call from Raj, given at 28.30. I'll take 30 as the price. So I'm just writing in the chat for your convenience. The stop loss is zero here because this is almost 30 rupees, so it's very. And please, guys, trade with your trading, like with your appetite. Please do not overtrade. Raj bhai, बात करते करते it is at 40 42. Let's come And down. your 550 put is almost 30. Yeah, 5450 put has also doubled. 15 के आसपास buy बोला था. I think yes. Now this let's wait and watch. So we'll just ride this one. And let's see where does this go. It might be zero also, but this mode It's of zero to zero. Like we'll just take it that way. We won't. It has again come to 27 28 जो आपने strike price suggest की थी. Okay, Nifty is at 19,546. Bank Nifty has 19. What is that? 44,560. Up down, up down. Let's see what happens. Till then, I'll take some questions from the chat. Viewers, if you have anything to ask, we are more than happy to answer.
By the way, TCS 3500 call option is what someone's asking. Bought or sold? Bought. I think it's bought. Kandeep sir, it's buy. You have bought 3500 call option of TCS. If he has bought, then I would say, well, see, that's why I've said I am a bit skeptical. My view and Dinesh's view are not matching here. Uh, I am not very positive with IT and Reliance. They have been using they are tools for the index management as of now. The weakness what we are experiencing in bank Nifty, that has been taken care by your Reliance and IT stock. But after some time, I believe even they might also lose the momentum. And I also explained earlier that your Nasdaq, that has down by 6% from the highs, and we incidentally we have also made Nifty. We also made the high on the same date, somewhere around 20th of July. So from where Nasdaq has fallen by 6%, Nifty has just 2.5%. But it's more of a trading bounce which we keep on witnessing in IT stocks, and 3500 call is unlikely that it will give you money. Uh, that is going to be very, very severe resistance for the stock. Okay, Dinesh sir, your view? Manage Nifty, IT will might not fall. It might give you slow moves like what we saw in Wipro, Coforge, etc. बैंकिंग में ज्यादा प्रेशर है नॉन स्टॉप. सो उस एंगल से बाय साइड में तो अभी उधर भी फ्रीज हो गया. जिस तरीके का आज का लास्ट 2 दिन का जो ट्रेंड है ना, थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे इनमें. सो Okay. Okay. Dinesh sir, Raj bhai, I request you all to take charge of the session for 10-15 minutes. I'll just finish my lunch and come. श्योर. राज भाई आप चालू करो. I'm here only. You guys can just screen scan something. I'm just on mute. तो ठीक है, एक बार के लिए हम लोग डेटा स्कैन करते हैं. दिनेश जी आप भी साथ में रहिएगा. देखिए पिछले हाफ एन आवर में अगर हम लोग देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी में एग्रेसिव कॉल राइटिंग हुई है, एंड दैट इज फ्रॉम योर 44,600 स्ट्राइक एंड हायर. जहां पर अभी भी पुट स्ट्राइक्स और पुट ऑप्शन राइटर खड़े हैं, दैट इज योर 44,500 पुट. सो एक जो जर्क होगा वो तभी होगा जब हम लोग 44,500 पुट्स में क्लोजर देखेंगे. एंड दिस इज नॉट जस्ट 30 मिनट्स, इवन इफ वी इवन इंक्रीज द टाइम फ्रेम आल्सो, द सेम थिंग वी कैन सी. So I believe there is a very highly likely chances that Bank Nifty may settle somewhere close to 44,500, but that might give us opportunity to exit from our put options. And for Nifty, as I said कि ठीक है, एक बार अगर ये 580 के ऊपर निकलता है, then only I will look out for buying. एक बार निफ्टी का भी डेटा देख लेते हैं इसी के साथ. और निफ्टी में 19600 में इस वक्त ऑलमोस्ट 2.7 करोड़ शेयर्स हो गए हैं, और इवन 19550 कॉल में ज़्यादा राइटिंग है, पुट्स में क्लोजर है. तो इट इज़ आल्सो सजेस्टिंग कि हाँ थोड़ा सा प्रेशर है. 60 मिनट्स से हम थोड़ा कम आते हैं, 30 मिनट्स में आते हैं, तो 30 मिनट्स में चीज़ें थोड़ी बराबर हैं. थोड़ा सा क्लोजर हुआ है कॉल्स में, बट स्टिल योर ओवरऑल क्वांटम इज हायर अमंग कॉल्स देन पुट्स. सो either we are going to settle near 550 कि जिसने भी स्ट्रेडल बेचा है he'll go home with the entire premium, और again we might see a move towards 500 levels. मेरा एक पहला लेवल था कि हम लोग जो है निफ्टी में आज का डे लो टेस्ट करें, तो काफी हद तक वो चीज हुई. Not exactly, but somewhere we have tested this 19500 sort of level again. तो एक प्रोबेबिलिटी है कि मैं दोबारा से 510 515 के लेवल में निफ्टी में देखूं, और जो कि मेरे पुट ऑप्शन जो हम लोगों ने बाई किया है उसमें शायद पैसा दे के जाए. दिनेश जी.
या मेरे को भी थोड़ा वही लग रहा है कि ये क्योंकि एक्सपायरी मैनेजमेंट इज गोइंग ऑन सुपर डुपर टुडे। ये 19 वही 540 के पास कर रहा है, और 44 540 के इर्द गिर्द ये लोग उसको घुमा रहे हैं जितना हो सके। अपसाइड स्क्वीज तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है आज कोई भी एंगल से। इट कंटिन्यूज टू बी दैट एकदम रेंज बाउंड स्क्वीज करके रखो इसको, आज पूरा दिन कहीं नहीं जाने दो। छोटा छोटा फॉल्स होप्स दिखा रहे हैं, एक बार रिलायंस को थोड़ा चढ़ा दिया, एक बार टाटा मोटर को चढ़ा दिया, और ये तो दम ही नहीं दिख रहा है मुझे तो एकदम। आई डोंट वांट टू इवन थिंक ऑफ गोइंग बाइंग अ कॉल टुडे। और पुट शॉट नहीं करने का मन है मेरा, मैं नहीं करूंगा पुट शॉट इस मार्केट में। नहीं, ये मार्केट पिछले 3 हफ्ते से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि राइटर्स, एटलीस्ट पुट राइटर्स को वो बहुत ही ज़्यादा ढंग से दबा दे रहा है। तो एट एनी गिवन डे आई विल नॉट शॉर्ट। और वैसे भी आई विल सीरियसली एडवाइस ऑल द ट्रेडर्स, आप बाकी 4 दिन 5 दिन थीटा करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑन द सेटलमेंट डे आफ्टर 1:30 please don't do theta. Don't look out for eating that 5 rupees 6 rupees sort of premium. या uh, this is not for that, मतलब we are not meant for that. या और एक और चीज आप नोटिस करो, आपने ड्यूरिंग द Q&A बताया था कि फार्मा में इधर फ्रेश थोड़ा डर लग रहा है। आप देखो लास्ट 1 आवर में फार्मा इंडेक्स इज ऑल्सो सीइंग अ स्लाइड इन द लास्ट 1 आवर। द इंडेक्स, फार्मा इंडेक्स, देखिए क्या सर भाई रेड। एक एक करके सेक्टर जो है ना अपनी जान छोड़ हाँ रहे हैं। हाँ, तो दे आर जस्ट अभी थोड़ा बैंक निफ्टी को ऊपर टाना तो फार्मा को नीचे मारा वहां से इन्होंने पकड़ के एकदम दिया। पूरा का पूरा शफल ऑन है इनका आज एकदम। नॉट लुकिंग नॉट लुकिंग दैट ग्रेट। इनफैक्ट आज आप एक बात बोल सकते हो, इतना हैवी फॉल में आईवीज फिर भी क्रश्ड है। नॉर्मली ऑन अ गिवन डिक्लाइन डे आईवीज वुड हैव बीन शूटिंग अप टुडे एकदम लाइक क्रेजी। वही एक माना जो जो ट्रैप ट्रेडर है, कॉल साइड बायर या पुट शॉर्टर, उसको बस उतना ही टोकन रिलीफ मिला है कि आज आईवी म्यूटेड है मार्केट में। हाँ, और अभी भी 1 घंटा बाकी है। मतलब अगर आईवी यहाँ से शूटअप होना चालू करता है ना, तो जिन हाँ लोगों ने, क्योंकि अभी भी आप जैसे सब लोगों को हमने दिखाया भी कि सबसे बड़ी राइटिंग कहाँ हुई है, तो पुट साइड में 19500 निफ्टी में, और कॉल साइड में 19600। तो ठीक है, जो बिल्कुल नॉर्मली डेटा रीड करना चाहेगा उसके हिसाब से तो यही है कि 500 और 600 के बीच में सेटलमेंट होना चाहिए। बट सिमिलरली फॉर द बैंक निफ्टी में ये 44 500 का जो पुट है उसको सबसे ज्यादा राइट किया गया है इस वक्त। सबसे ज्यादा ओपन टेस्ट अगर कहीं है अक्रॉस द स्ट्राइक, सो अगर मेरा ये डेटा सही है तो वो 44 500 में है। तो यहाँ पर अगर एक बार मार्केट इसके नीचे, मतलब यही चीज हम काफी टाइम से बोल रहे हैं कि अगर 44 500 की इन ऑप्शन राइटर्स में प्रेशर आया तो फिर जो है मतलब another 200 300 points in bank nifty we might see. That's the only reason why we had given this put option. And चलिए बात करते करते बैंक निफ्टी का तो पुट में तो पैसा आ गया होगा लोगों के, इतना मुझे लग रहा है। हाँ, 27 रुपए का हो गया। वी हैव रिकमेंडेड समवेयर अराउंड 18 15 to 18। तो बात करने के साथ है, और इसी कैंडल में इसने 33 का हाई भी मारा है। तो ठीक है, एक और हमारी आज का ऑप्शन जो है वो ठीक जाता हुआ। इसमें सर एक और बात है कि इतने बड़ी हैमरिंग हुई है बैंक निफ्टी में, तभी भी इंडेक्स लोअर टाइम फ्रेम में ओवरसोल्ड नहीं है कि हम ये सोचे कि यहाँ रुक जाएगा, यहाँ से बाउंस मार देगा। ओवरसोल्ड भी नहीं हुआ है। इमेजिन आप करो, मतलब अभी भी डेंजर जोन में ही है। इट्स नॉट वर्थ इवन लुकिंग एट गोइंग लॉन्ग टुडे एकदम। ये बहुत खराब डेटा है। एक प्रश्न है सर, मैंने देख नहीं रहा था। कमिंस पर वो पूछना चाह रहे हैं जीवन जी, व्यू ऑन कमिंस इक्विटी बाय फॉर स्विंग। सो फ्रॉम द स्विंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव इफ यू कैन थ्रो सम लाइट हियर। Cummins has been a rank out performer, there is no doubt about it. But again, आप जो volatility उस particular cap good sector में अगर आप देखोगे, the way ABB and Siemens जो एक
अपट्रेंड वाले स्टॉक्स थे, दे वर आल्सो गेटिंग हिट अप डाउन लास्ट फ्यू डेज. तो नॉट एडवाइजेबल टू try to get into a sector like that for defensive point of view right now. At least I don't think so. इसमें भी काफी शार्प फॉल आया है फ्रॉम 1 अगस्त. काफी शार्प फॉल है. तो उस एंगल से आप देखोगे तो यस, इट इज at a good support level of 1740. But is it giving a long signal? Not to me. It's not giving me a reversal signal at all yet. Not convincing enough. अच्छा, एक कमेंट आया है. थैंक यू राज एंड दीपक सर, आई बुक प्रॉफिट इन एसबीआई कार्ड. सर, दिस इज नॉट राज एंड दीपक, दिस इज जस्ट राज दीपक. आई एम वन पर्सन, सो जस्ट ऑन लाइटर साइड. एक क्वेश्चन है सर इंडसइंड बैंक पर. सो अगेन आई वुड से इंडसइंड बैंक के साथ कुछ न्यूज फ्लोस हैं, जिसमें ये है कि परहैप्स इंडसइंड बैंक कुड बी पार्ट ऑफ एमएससीआई. But I would say कि below 1380 long position should be avoided there. If you are having a position, just keep an stop loss at 1380 and hold that. Otherwise, just avoid it. Till it is below Dinesh sir, just one thing. 1440. Yeah. Grasim results are out, and results have beaten the estimated net profit that was expected by the street. So can we have Grasim's chart? Just 1 second, please. अच्छा, राज भाई ने खोल दिया. नहीं सर, आप खोल लीजिए. बस एक चीज बोलना चाहूंगा कि हैवी वेट्स में एटलीस्ट वी हैवंट सीन दैट सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस पोस्ट रिजल्ट. सो अच्छे रिजल्ट के बाद मिड कैप्स में तो वाइल वी हैव सीन कि हाँ स्टॉक्स में मूव आया है, बट हैवी वेट्स जो भी स्टॉक्स हैं उनमें इवन बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस और बहुत अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी हम लोग स्टॉक में उस तरह का मूव नहीं देख पा रहे हैं. सो दिस इज नॉट जस्ट banking where we have seen good result, but across the board wherever you have seen a good result, we have seen profit booking. But regarding Grasim, Dinesh sir can give us a technical view, but from the open interest perspective, the longs are still intact in the stock. So until unless I will see liquidation in these positions, I cannot comment. And for me, stock remains positive. यस सर, सेम व्यू है कि जब से खास करके जब से इन्फोसिस का रिजल्ट आया था उस दिन से हम देख रहे हैं रिजल्ट आता है और अगर अच्छा है तो स्टॉक अपसाइड ज्यादा नहीं होता है, खराब है तो पकड़ के मार देते हैं उनको. तो इसके केस में भी वही है, लेट इट सस्टेन अबव 1830 तो कुछ मोमेंटम आएगा. नॉट 1 आवर, एटलीस्ट गिव इट 1 डे क्योंकि ये वीकली है. 1830 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ही स्ट्रेंथ है स्टॉक में. तब तक के लिए शांत रहना ही बेटर है इनमें फिलहाल. लुक एट द विक्स बन रहे हैं एक एक स्टॉक में, टू वॉलेटाइल. क्या ट्रेंड पकड़ोगे आप इसमें? If you talk about volatility, then I think Bank Nifty should give you a nice volatile chart. If you can see the 5-minute chart of Bank Nifty. फिलहाल गौरव एक काम हो गया था कि ये 15 वाला जो हमारा ऑप्शन था इसमें करीब 33 का हाई मारा था और अभी दोबारा से 17 पर है. तो अगर कोई तब नहीं कर पाया तो अब यार 550 का पुट, मतलब इसके अलावा मेरे पास कोई और स्ट्राइक है ही नहीं कि मैं उसको बाई बोल सकूं. अरे आपका बैंक निफ्टी अच्छा चलेगा मुझे लगता है. चले तो अच्छी बात है, पैसे बनेंगे. बस 5 मिनट है, मैं बस खाना खत्म ही कर रहा हूँ. मतलब अगर 15 मिनट में मैं बैंक निफ्टी का वाई चेंज देखूं तो ये 44,500 फुट में और वाई आ गया है. एंड करीब 1 करोड़ शेयर्स बैंक निफ्टी की 44,500 फुट में हो गए हैं.
तो इसमें क्लोजर होना बहुत जरूरी है अगर मेरे को पैसा बनना है तो। Dinesh sir, someone has bought Reliance 2500 put option at 21. Yeah, it's just to 5 minute. Just let's take it to a higher time frame. See. आज तो कुछ इतना खास मूवमेंट नहीं दे रहा है 2500 का पुट. इट टेक सम टाइम, यू वांट एक्सेलरेशन इन इट. इट विल ओनली कम अबव 28. अबव 28 सॉलिड एक्सेलरेशन आ सकता है उसमें. तब तक के लिए कुछ ऐसा नहीं है. लाइक अगेन अगर एक हैवी वेट मार खा रहा है बैंक निफ्टी, तो दूसरा हैवी वेट खड़ा हो जाता है सामने से डैमेज रोकने के लिए निफ्टी का. वही चल रहा है उस. Keep 28 and up to be more फिलहाल के लिए there aggressive. is a huge mismatch between fair price of Bank Nifty weekly option and the spot. 20 points का premium में है fair price future side मतलब. That is why the premium is not able to reflect the fall that Bank Nifty is giving in spot. Plus, if you see, 3 weeks to go for the settlement, future premiums are not that great. Cost of carry बहुत low कर दिया इधर. That's mainly because in the last 2 weeks, FII unwinding has been so heavy, and with sporadic shorts here and there कि प्रीमियम ही खत्म कर दिया उन्होंने उसका. निफ्टी फ्यूचर प्रीमियम कितना है इस समय? जस्ट स्क्रीन 609 to 550 का है आज प्रीमियम. मैं समझा नहीं क्या कर रहे थे गौरव. नहीं, गौरव गो अहेड. भाई वीकली कॉन्ट्रैक्ट के भी फेयर प्राइस होते हैं जैसे, क्योंकि उसके हिसाब से ही प्रीमियम्स अपने वैल्यू ले पाएंगे ना. तो स्पॉट और उसमें डिफरेंस थे, तो अभी जाके वो इक्वल हुए. मतलब हाँ, क्योंकि वही मैं देख रहा था. निफ्टी स्पॉट had gone down to 44,542 something, but प्रीमियम में चेंज नहीं आया था because that fair price in futures was showing somewhere around 44,570. That is the issue. But I think last, like the zero hero here, usually people hold it till last. Now it has again come to 23, 24, Raj bhai. मेरे को ये 40 हो सकता है, पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लग रहा है कि वी माइट सी समवेयर क्लोज टू 40. क्योंकि बैंक निफ्टी अगेन द सेम थिंग व्हिच इज हैपनिंग एवरी वीक, मतलब फॉर एटलीस्ट फॉर लास्ट 3 वीक्स. आई एम नॉट गेटिंग कॉन्फिडेंस देयर. मैं साथ में एचडीएफसी बैंक भी देख रहा हूँ कि अगर एचडीएफसी बैंक में कोई बड़ा रिवर्सल मिलता है क्या. तो अगर 1640 के ऊपर एचडीएफसी बैंक आता है देन आई विल चेंज माय व्यू ऑन बैंक निफ्टी, बट टिल देन आई डोंट वांट टू. चलिए, पैसा बना होगा लोगों का. Raj bhai, 525 Nifty spot 525 नहीं and यार, 37. yeah 44 525 मैंने देखा था अभी. Okay. I'm back, लंच हो गया मेरा. नहीं, यू आर टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी 44,525, but या yeah, पुट ऑप्शन डबल हो गया ना हमारा. 25 रुपए का था. put option is at 35. हमने 2730 के आसपास दिया था बैंक निफ्टी का.
Yeah. हाँ सॉरी मैं कॉल देखने लगा No था. problem, no problem. Viewers, the Bank Nifty put option was 44,500. Now Bank Nifty is again approaching its day low, and this value is at 34. And it was a zero hero. So यहाँ पे there is no stop loss. The stop loss is usually zero, and right now it is trading at our suggested price of 30. Anywhere between 27 30 was given. So let us see how things pan out. But given the scenario here, the Bank Nifty could not sustain the upper level. So as Raj said, ki chances नीचे के ज़्यादा है, तो we'll wait and watch where do we go. And Nifty is also near 19,535. I think straddle writers of 1950. It has been a great week where 62 was the price that was suggested. It is at 33. 50% value almost gone. So the So first anybody would have, call was right, absolutely right, bang on. yeah, So far yeah, कि 550 का short straddle किया जाए. absolutely. So option writers would have also made money here, at least with 19,550 straddle. So right now the only strike which is looks dicey is 44,500 put. Rest all whatever trades were taken by suggested by Mr. Rajdeepak all have met their targets. So let us see what happens. What is in store for Bank Nifty for the last 45 minutes? Dinesh sir, are you seeing any pullback in Bank Nifty by any chance? Bullish clamp or something on lower time frames? No, nothing of that sort. It's just that psychological level of 44,550 is trying to hold it. There's the Ichimoku daily cloud there. Continuous वहां जाके टेस्ट कर करके रुक रहा है वहीं जाके. Okay. हाँ, आज तो बस वही है. आई कांट सी एनीथिंग ह्यूज कमिंग आउट ऑफ the bank nifty out here. Lower time frame में है, but it's not something I'm confident of right now. Okay. Right now, Rajbhai, someone's asking, can we consider 44,500 put option right now? Someone has not. Again, This, 18 रुपए का चल रहा है. yeah, Stop loss would be zero. yeah, Consider, not consider, matlab that is something else. But see, the highest probability of Nifty settling is 1944. Sorry, Bank Nifty is 44,500. Highest why. yeah. But अगर इसको मतलब this it has become even सट्टे पे सट्टा. Not सत्ते पे सट्टा, it's become सट्टे पे सट्टा कि हाँ हम लोग उसको breach कर दें. So that's why I just said कि it would be or either zero, and there are very likely chances that it might become zero. Okay. Yeah. So I think anyone who's looking for fresh entry should avoid it unless you want to gamble on the strike with zero thing. I think more or less we are done with today's expiry. It's 2:45, max 15 minutes, and so ones who are holding 44,500 can keep on holding with stop loss of zero. Ones who are not, then please do not enter right now. That's what, because it becomes a gamble, and it is again at 2022. So Rajbhai, fresh entry we'll avoid. नहीं देखो सेम रेट है. अगेन my for me I'll keep on holding it till the expiry. Okay. So if someone wants to buy it, he can remain a buyer, but there is no stop loss. I'm strictly saying that Yeah. it might become zero. Okay. So I think more or less done for today. I think great expiry again with Bank Nifty put spread. Some made money in Nifty. Put suggestion from you, Rajbhai, in 19,600 put and 19,550. And 19,550 zero hero, you suggested near 18 and went to 33. It was almost double there as well in second round. Second round, Bank Nifty 44,500 put option did not work out as would have expected. So yeah, viewers, this is all from our end for today's expiry. We'll see you guys. Nifty is Yeah, again at 30. That put is again 30. Nifty is Nifty is again gone down yeah 532. again. So I think आपने बताया भी बोला था when I gone for lunch. I think you had clearly said कि if anybody wants to take it again, can buy it near 15. And I think again a double doubler here from 15 to 28, 29. So viewers, okay, that's great. Milind sir, you made 100 points in 19,550. Rajbhai, someone has made 100 points total. I think that is 5,000 per lot. So it is a very good
That's great, Mr. Mandar. You made 22. That's 22,000. Rajbhai, the comments are there. We can chip in with some comments. So viewers, if you like this initiative from Thank you ICICI all. I Direct, just want to say कि if you are making money, yeah, that's what I wanted to say. कि if you like our presentation or our views, then do trade with us also. Do trade with ICICI Direct, explore our monthly derivatives. All the research recommendations in the derivatives, both in naked options as well as your strategies are available there. And you need not to go anywhere else. All those recommendations which we are discussing, and even my other colleagues, which works for you, they are available there. In case of any issue, you can always drop a mail to us if you are a client, and hopefully we will be having the same profitable expiries in the futures also. yeah, But just one thing I want to say, we have been gone right for last 4 weeks so far. That doesn't say that we will continue to be right on the right side of the things. Sometimes we may also go wrong. So please keep take that also in stride. Thank you yeah. so So much. please, so request that keep your capital safe. Put a stop loss. Listen to what Raj says. Do not trade in strikes that is not suggested by the experts. Dinesh sir, as usual, thank you so much. Matlab, it's an absolute pleasure that you take time and come for this session. I still remember you suggesting ki 19550 can be looked at and near 62, and it is near 33 now, and in 30 points gain there also is a brilliant one, sir. I think I think given the Nifty movement, I don't think so. It should expire near 10 rupees or something. It should give 50 rupees easily to someone who has taken this trade. In fact, if you ask me on the last 4 Thursdays that we have done this, today's was the toughest one. And to get it correct on a tough day is something, Rajbhai's credibility he was just too good. He was bullseye today right throughout, and he has always been. So it's tougher, on a trending day, आप कुछ भी जाओ डायरेक्शन के साथ चल जाता है. But on a non-trending day, to pick an exact resistance and say कि यहाँ पर आप put low is hats off Rajbhai. Too good. Thank you, sir. Absolutely. So, viewers, if you like this initiative of ours, we just require one token from you. If you're trading, trade with ICICI Direct. And also, if you like this video, please hit the like button and please subscribe to our channel. And if you have made money, you can give us a shout out on social channels like Twitter, Instagram. You can tag ICICI Direct. We would be more than happy to retweet and like your shout out. So that's the token for us. So thank you so much for being a part. See you guys in the next expiry. Mohan Murli, there's no BTST. This stream is only for expiry trading. That is for Thursday, and we'll come next Thursday. And there is a session on Saturday at 11 a.m. where Dinesh sir is there with us, who talks about options. We talk about options and we talk about setups that can be seen. So see you guys this Saturday at 11 a.m. Until now, thank you so much. By the way, since we're talking, Rajbhai, थोड़ा लगते जाते जाते गिफ्ट मिलते जाने वाला है. Bank Nifty is near 44,533 and your put is at 26 rupees. Bank Nifty has gone down. Bank Nifty is sliding now. I would say Nifty is sliding more at 530. Yeah, सो ये अगर ये लेवल जा रहा है ना, मतलब वी आर अप्रोचिंग. क्या होता है कि 3 बजे वाली बात होता है, उसमें मोस्टली गलत हो जाता हूँ. बट हो सकता है कि वी आर रिटेस्टिंग टुवर्ड्स 500 अगेन. absolutely. रिकवरी विच पीपल वर एक्सपेक्टिंग मे नॉट बी देयर. सो हाँ, वो लास्ट में वो पैनिक में जो 550 पुट राइटर है, Hmm. उनको भी टालने के मूड में आ गया I वापस. think this is going down. I think we'll see. We'll update it on Telegram हाँ, channel. but see, anybody who has bought option at 15 to 18 rupees, his money is almost double. So the first rule of the trade, uh, Trailer stop loss to the cost. Don't lose. yes, Yeah, don't lose it. don't lose money. So while we are going, 44,500 put is at 30. I think 32, 33 I saw. It's at 20, 29. Please, anyone would have bought it at 15 near day's low. Please put a stop loss at your cost. And that's it from our end. If you like our session, you can hit the like button, join our Telegram channel. You can give us a shout out on Twitter or on any other social platform. We'll be more than happy to
retweet it. Thank you so much, guys. See you in the next session. Thank you so much. Bye bye. Bye bye, everyone. Thank Have a you. great day. Thank you. Thank you. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from ICICI Direct.